and I can't track all of them. And I believe even I am not capable of doing technical analysis 2 years or 5 years down the line. The crux of the discussion or the majority of the discussion will be centered around long-term growth story, 2 to 5 years long minimum. So we are not talking about what is going to happen on Nifty tomorrow or this month or the next month. Although briefly I'll try to address that as well. It will not take more than 2 minutes because my view can be as good as your view or your view can be much better than my view. So I'll discuss that in a couple of minutes. And so here we begin. See, why I wanted to do spaces on this, because individually I'm telling a lot of you that we as a country, our country is at an inflection point where we are going to see very, very high growth rate. And in spite of Corona or whatever we are seeing, the green shoots in the economy, it's already visible. Yeah. And my view is that, if you look at Nifty from 2005 to 2008, I think, just give me a second, guys. I need to give correct data points, otherwise my trollers will start saying that, okay, well, you said this, but this was the wrong. So Nifty was around 2000 in April 2005. And by January 2008, it went to 6,000 three times. From 2005 April to 2008 April, it went three times. And I believe we are on a similar, and before that, from 1997 to 2005, it was almost, in a particular range, not breaking out on a monthly chart. So I believe we are on a similar inflection point, and we are going to be, in another 2 to 3 years, we are going to touch three times from here, which is like 51,000 on Nifty itself. I know it's a very audacious claim, and that's why it merits a lot of interesting discussion. First of all, we are seeing so much of liquidity in the global markets. Liquidity is just sloshing around at unprecedented rate. In last 1 year, America has doubled its balance sheet. Fed has doubled its balance sheet, and every country that we know of, including RBI, including Bank of Japan, including Eurozone, is having easy monetary policy, expecting inflation to pick up. Why do they expect inflation to pick up? Because inflation picking up means demand picking up. People are desiring more toothpaste, more footwear, and so on. But people are simply not buying. So in US, inflation is, transitory, that they say, and for a lot of commodities, it has already increased to an alarming level. In India also, if you look at soybean, if you look at other pulses, if you look at steel, if you look at aluminum, so inflation is visible. In end product, it is still not visible, but it is visible. So what happens is that when inflation goes through the roof, if I can give you a simple example, if you're buying a Britannia biscuit and if it is affected by inflation, so what will happen? The price of the biscuit will become double. Even if the entire country continues to consume same quantity of biscuit, the top line of the company has become double. Even if the percentage margin is same for the company, its absolute margin has become double if operational efficiency is the same. So inflation in the first in the inflation cycle, in the first phase, every company's top line increases much faster than the inflation, because these are the efficient companies. These are the better companies which are listed. So if inflation goes to double digit, which I think it will go very soon in India, so all these consumption stories or pharma stories, these you will see double digit growth or maybe 20% kind of growth in the top line of these companies. So that is one very strong reason which is being factored in by the market as of now. We might have some correction. I'm not denying that. I mean, the correction can be short-lived or it can be time-wise correction. Any bull run always goes through phases of correction. In fact, when I told you about 2005 to 2008 also, there was a 20-30% correction three times. So I'm not ruling out correction, and nobody can predict when the when the correction happens. Okay.
So, but we are talking about the secular bull run growth being intact. So that is one thing, is the inflation story. And if you are tracking different commodity stocks, you would know that this inflation is the effect of inflation is already visible in a lot of commodity stocks already. If you look at Tata Steel or Jindal Steel or many other commodity stocks, it is already going to a higher level, and sooner or later it will have an effect on the index. That is one big reason why we have to take a higher level of because of the persistent inflation which is going to be there in India. Now, a lot of people will say that Fed is already talking about inflation and they're talking about tapering, but they themselves have said that they are not going to do anything before 2023. Okay, I think as it happens that raising rates always brings bitterness in the society and the economy. It it brings bitterness among businessmen and so on. We have seen when Raghuram Rajan was there and he was raising rates, or when Mr. Subbarao was there and he was raising rates. It never appeals to politicians. So what happens is that because of this particular thing, they are always lagging unless inflation makes a headline of Times of India or Wall Street Journal in a big way. They are not going to increase rates. They are not going to start tapering. So, in a simple language, if I tell you, that is like too late. So, till 2023, or even if you ask me, my guess, till 2024 mid, they are not going to do any tapering. The easy monetary policy, the rate at near 0% is going to continue, and that effect will be there in the market. Second is, if you talk specifically about India, Indian exports have picked up like anything in last 1 year. In fact, if you look at, for example, pharma exports, for US, pharma, we are making 40% of the pharma requirement is being made in India. If you would have seen HCQ fiasco or the vaccine, we were vaccine guru and all that, because others simply don't have the scale. They don't have the manufacturing capabilities. We have that. Okay. So exports is one of the biggest driver which is going to be there in fueling the growth for the GDP also, and for the index also, which is going to be sooner or later, which is going to be mirroring the economic growth. That is one. Second is if you look at last budget, and just before the budget, they table a document which is called economic survey. So if you look at the economic survey, the government very clearly said that they are going to be doubling down on infrastructure spending, and they gave an entire borrowing calendar and borrowing program which was ambitious. Okay, so when government spending is there, which it will have another impact on spiraling impact on inflation. Last time also when inflation came, in I think 2011-12, they introduced Narega, money in the hands of the poor. That was a huge spending program. I think it was started with 60,000 crore, and so that immediately gives a lot of buying power to the common man, and it fuels the growth story in various stocks. That is going to be there, but not through direct spending to direct money transfer to common man, which is happening through various schemes of the government, to Ujjwala hai, Jan Dhan Yojana hai, and so on. But I think this time government is going to spend a lot of money on the infrastructure. And so by way of infrastructure projects and by way of employment, etc., the trickle down effect, a lot of money will be there in the hands of the lower middle class and so on, and which will increase the consumption story even further. So that is one. So that is second. Third thing is that government has done a lot of reforms in last 4 years, effect of which has still not come on the horizon. Here I want to mention that, if you have, I generally try to be very politically neutral. And if you would have noted my tweets very, very carefully, I'm not pro-government. But here we are talking about our portfolio. Here we are talking about how Nifty is going to behave, or how the stock market is going to behave. So I'm just giving a fair assessment of how government has, formulated these policies and how it is going to affect the economy. First of all, government has shown extreme will in implementing these laws, be it IBC, be it various schemes to empower common man like Jan Dhan, I told you, or be it GST reforms, or be it farm bill.
or there are various such bills on which government has taken a stand, on which they are not ready to back down. This kind of political will was not seen in last 20-25 years, and I believe that these reforms, once implemented, although these are not humane reforms, these are not, if you talk about social justice, these are not the best of the social justice kind of reforms, labor reforms or land reforms. There's so many bills government has passed. So effect of this will come into the picture now. Club with digitization, we have highest penetration of, I think, digitization in the entire world now, surpassing even China. And because of that, the movement of money, the movement of goods is going to be very, very fast. Uh, Ease of doing business, which government is talking in jumlas and all that, it is going to be there on the table for a lot of businessmen, for a lot of parties which are coming from outside, and we are going to see that effect. It's not a new thing which I'm trying to predict or I'm trying to tell you. In 2003-4 also, those who were there would remember that, government went with a same NDA government. It went with a slogan of shining India, and there was a philosophy behind signing India. I think when Shri Atal Bihari Vajpayee ji was the Prime Minister, he impaneled a McKinsey report. I have shared that McKinsey report on my Twitter handle multiple times. And McKinsey suggested an 8-point agenda for double-digit growth. And Mr. Atal Bihari Vajpayee, in his famous tone, he said, "Lekin ye sab hoga kaise?" So all these golden quadrilateral, all these various kinds of reforms which were done by previous Indian government were there. It just before the election, it fueled inflation. If you remember, on one side the urban India was shining, people had multiple jobs, but on the rural side, unfortunately, bad monsoon clubbed together, we saw huge inflation. Especially the prices of pulses and onion went skyrocketing, and government lost the election. But the effect of the reform was visible for next 10 years. In fact, if I may say so, next government had a lot of ease of doing things because of those reforms. If I just take you through one or two of these government's reforms, they have I think they earlier had public sector banks totaling to 27, and now they have clubbed it to 12. Those who have seen the labor party, I'm saying CPM or CPI or any kind of resistance to such merger and acquisition for government-owned entities, it was not an easy thing, but it was implemented so smoothly. These companies had a total operating profit of I think 10 lakh crore, and they showed a net loss of 1 lakh crore. So government did a provisioning or a write-off of 11 lakh crore, cleaned up the entire balance sheet. This could not have been done without the iron will of the government. So what it means is that for the next wave of infrastructure reforms or infrastructure spending, PSUs will be in the position to lend very, very aggressively. So this was unthinkable by any means. First, the merger of, and now the government has announced that they will have 8 PSU banks, only 8. So in spite of all the integrity issues and in spite of all the scams which we saw, this was one of the major steps which will, we anyways didn't need weaker public sector banks which were mismanaged, like Allahabad Bank or, now the only powerful banks are left. So this is just one reform I'm telling you on which we don't get to see or get to experience in our day-to-day life, but it will have a far-reaching impact in terms of, fueling the next credit cycle growth. I think that is going to be in double digit as 20-22% of credit growth I am seeing. So that is second. Export I have already told you. Inflation I have already told you. Government reforms I have already told you. The one thing is which we are not very sure as of now is informal economy. It is yet to pick up. And if you talk to any local businessmen, they are like they are severely constrained. They are going bankrupt and so on, especially hotels, entertainment, and all these coaching centers and dhaba walas and so on. That is yet to pick up. That is one thing you can say is still not addressed. But I think once the inflation fueled growth is there, people will get new opportunities, new kind of businesses will be there.
And because of digitization and because of online economy also, people will get new ways of employment in next 2 to 5 years, which is happening in front of our eyes in a very, very big and faster way. So I mean, in my view, we are going to see Nifty to unprecedented levels. And I keep telling that one to one to a lot of people. So I thought today I'll just broadcast my views. And so don't get surprised if it crosses 17,000 or 18,000 or 20,000. Market always goes up in a jiffy. If you just look at, Nifty was at uh, April 2006. Nifty was at 3,000. April 2006. And in January 2008, less than 2 years, it was at 6,000. It became double from there. So when market goes up, it goes up in a way where it will surprise you. You will have a lot of FOMO. And so this is my uh, core idea of telling you is that if you are betting for long-term investment, then be long on Nifty. And so coming back to the second part, when you want to be long on Nifty, there will be a lot of corrections, 30%, 40%, short-lived corrections or corrections in like the way we are seeing in ITC, that your stock is not moving, every other stock in the world is moving. So in that context, it is very important to have stocks on which you can have conviction. Sorry, in which you can have conviction. Okay. Sorry for my poor English, guys. Yeah, conviction. So you need to have stocks on which you can have conviction. Here, I just want to point out one very small thing, that in an inflation-driven economy, the input variables also go very, very, very high. So again, taking example of Britannia ka Tiger biscuit, okay, and ITC ka biscuit, and all the other biscuit. So the wheat cost or the all the ingredient cost is going to go up for everybody. Only the winner who has the pricing power, where our children go crazy, मुझे लेस का ही खाना है या मुझे टाइगर बिस्किट ही खाना है, नहीं मुझे वो कौन सा आता है आईटीसी का, मुझे वो नहीं खाना है. The guy who is having the pricing power, the guy who has the branding power, will be able to take advantage of the inflation. Otherwise, if input costs go up simultaneously or even higher, and if you don't have the pricing power, if you don't have the branding power, you will have to pass on the inflationary pressures to the end consumer. Either you will give a smaller pack, or you will reduce your margins, or you will increase the cost. In all the scenarios, your biscuit is not going to sell. And in any case, children were not looking for your biscuit. So you will be affected. So if you look at my portfolio, the way I have designed it is, these are all sector leaders. People who have the pricing power. So that is the core philosophy I follow. And second is that, if someone is a market leader for a decade or long in a country which lacks integrity in general, people don't believe in having integrity. And so today only you see now, the Poonawala was talking about doing vaccination for the entire world and being the Mother Teresa of the entire world, and he was caught in insider trading case. SEBI has banned him or fined him or whatever. I have not read the news yet. So in India, integrity is a hard thing to find. So, but guys who are sector leaders for a decade or more, they will have integrity with their distributors. They will have integrity with their suppliers. They will have integrity with their vendors. Otherwise, they will not get good vendors. Otherwise, they will not get good distributors. So if you talk about a Bajaj Auto, or if you talk about an Asian Paint, or if you talk about an HDFC Bank, vis-a-vis an Yes Bank. So, if I tell you the Yes Bank fiasco in which of which I have made a video also, and nobody watched it, they gave shady loans to India Bulls 50 companies with having no track record, having no paid up capital, and so on. And those 50 companies gave loan to each other and mixed it in a mixie. And then they gave loan to 3 daughters of Rana Kapoor, loan back. This was filed in Bombay High Court and Delhi High Court much before. And India Bulls even filed a defamation suit on the case filer and so on. There's a very good corporate thriller on that. But the point I'm trying to make is, the promoter of the bank, the MD of the bank himself, gave a shady loan and then got a loan back to his daughters. So integrity is very important when you're investing a stock for a very, very long time. So that's why I have chosen, even for example, Dr. Reddy's or for Asian Paints, they might not be growing as fast as Adani. But when you're talking about
stocks which you have a resolve to hold for 2 to 5 years, where the correction is going to be there. So for you to not have any kind of iota of doubt, you need to have companies which are like sector leaders, companies which have very good integrity of management. And trust me, there are very few companies in India which merits that kind of categorization. That's why I have chosen these stocks. And this is about what I wanted to say. And I'll keep it open for questions now. One humble request: if you are asking question, stick to some timeline. Don't go very off. And if you are giving your point, then you can speak for 2 to 5 minutes. But then you say that I'm going to talk. Sure, sure. Thank you so much for your inputs. I have basically two questions for you. Basically, you are talking about more on the side of production, but if we talk about consumption, I have 2 points. One is that in US we can see that the bank rates are very low. So, and in US also the job occupancy ratio is very less. So, in future, is there any chance that we can see that condition of 2008 also in the US, since everybody is getting loan or home loan or something like that, but they don't have money to pay? Something like that can also happen in US. And second, you're talking about the consumption in India also, that inflation actually will promote in India, right? But if you talk about the consumption ratio also, if inflation is going to raise, then that is the bad for consumer also, because since in India also we are mostly into service based economy, we are not much into production, or in agriculture also we are not like that up to mark. So if we talk about the service base, we see that since there are so much unemployment is there in India, is there any chance that the consumption might get slow down since the inflation is going to up? Okay. Okay. So sorry to cut you short. Very, very sorry. I think I got your question. Uh, First is, I mean, to be very honest with you, you spoke a little longer, so I forgot the question also. But I'll just try to rephrase. If I'm not able to answer, you're free to ask again. See, you asked about whether the inflation will be there in India as well. So I'll give you 2 3 data points. One is that we अगर इसको हिंदी में ही बोल पाऊंगा, इंग्लिश में तो नहीं बोल पाऊंगा. हम हर साल एक नया ऑस्ट्रेलिया बसाते हैं इंडिया में, पॉपुलेशन वाइज. वो बच्चा डायपर पहनता है, वो वैक्सीनेशन कराता है, वो दूध पीता है, वो बाद में सेरेलैक खाता है. हर साल एक नया ऑस्ट्रेलिया. So you can't compare ourselves with US, which has 1/3 of the population. You can't compare us with Russia, which has a declining population, or Europe, and so on. So we are a consumption-driven economy because of our own fast-moving engine, which is not stopping, which is like accelerating. That is one. Second is, so like this year, one new Australia is going to eat Britannia ka biscuit. Second is that if you compare, our home loan to GDP ratio, it is probably around 19%. If you talk about Thailand, it's about 30%. If you talk about US, it's more than 100%. Similarly, if you talk about demat accounts or people who have anything to invest in the formal economy, we have just started. Like we are not even comparable to Bangladesh. Our focus was somewhere else. Our focus on poverty elevation in previous governments, which is very good. I'm at heart, I'm a very socialist person. But when it comes to this discussion is about investments and Nifty, right? So we have just started when it comes to giving priority to including everyone in the mainstream, giving priority to having more demat accounts, facilitating. I mean, just a 1 year back or 2 year back, opening a demat account was pain in the neck. Okay, so now it is not. I opened 2 demat accounts probably within 10 minutes. So government is trying to remove all the bottlenecks through which you will have 10 times more demat accounts within 2 years. And a lot of people who are listening to me, I don't know how many people are listening. Okay, 300 people are listening to me. A lot of people would have opened their demat account this year only. And if I do a similar spaces next year, probably that number will be 5 times more. So we are going to see exponential growth in demat accounts. We are going to see exponential growth in people opting for mutual funds, people opting for bank accounts. You will be shocked to know that our bank account penetration is so low, and that is the reason scams like Sharda Chit Fund or Shraddha Chit Fund
or every other kind of a garden variety of chit fund keeps happening every year or two, because banks had such stringent KYC, which is being diluted as we are talking. Okay. I mean, to get a cooking gas connection only, you had to produce address certificate. You had to produce a character certificate. I'm not kidding. Like 10 years back. I didn't get because of the bad character. So that was a joke. So the thing is, we have just started, and ease of doing business is going to be visible in every government is trying to do it in every area of the economy, wherever No, is sir. the pain point. I got a point, बोलिए. but my point is this कि देखो इंडिया नहीं, में अगर आपका लोगों सुनिए के सुनिए पास अगर में आपका काउंटर पॉइंट है तो वो मैंने सुन लिया. इफ यू वांटेड द आंसर तो वो मैंने दे दिया है. उस आंसर में नहीं, अगर आंसर पॉइंट मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे यूएस में 2008 के अंदर क्या हुआ था कि हाउसिंग सेक्टर के अंदर काफी डाउनफॉल आ गया था कि लोगों ने लोन ले लिया एंड दे आर नॉट पेइंग इट बिकॉज दे सर, डोंट मैंने हैव वही मनी तो टू आपको पे. बताया ना कि अभी हमारे यहाँ तो हाउसिंग लोन ही 10% है, वहां तो 100% था. So करेक्ट. we can't compare. Okay. नहीं, बट द मेन ग्रोथ इज बिकॉज ऑफ एफआईआई, राइट, नॉट डीआईआई. डीआईआई जो भी आ रहा है ग्रोथ, वो तो जो लोगों ने आप अकाउंट अपनी बात समझा रहे हो सर. अब नाउ यू आर टेलिंग मी योर स्टोरी. अगर सॉरी इफ यू वांट टू यू जस्ट बता दीजिए, मैं सुन लूंगा, नो प्रॉब्लम. बट देन आई विल हैव नो, वी कैन हैव डिफरेंट व्यूज, राइट? श्योर डेफिनेटली. प्लीज गो अहेड. नेक्स्ट क्वेश्चन. Am I audible? हाँ बोलिए. Unless I tell you that you are not audible, please don't ask this question. That whether you are audible or not, you are Thank you, sir, audible. thank you for giving me opportunity to ask my doubt. Actually, मेरे को कुछ stocks के बारे में ही पूछना था. Like we are seeing that all the big sector stocks या फिर जो costly stocks of India है अभी, वो लगभग सारे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं apart from MRF. आप देखिएगा हनीवेल भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पेज इंडस्ट्रीज बाकी सब परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अभी देखिए मोटर सेक्टर्स उठ रहे हैं, तो उसके एक्सपोनेंशियली आई एम एक्सपेक्टिंग कि टायर कंपनी को भी उठना चाहिए. लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि एमआरएफ का स्टॉक्स को अगर हम नोटिस करें तो पिछले 2-3 सप्ताह 4 सप्ताह से कंटिन्यूस इसमें डाउनफॉल हो रहे हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम तो इसमें कभी हुआ नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब कंसोलिडेट हो रहे हैं एवरीडे, इंट्राडे वाले निकल रहे हैं करके, और ये सब मतलब एक स्मूथ वे में उठ नहीं रहा है. तो आपका कोई व्यू सर ऑन एमआरएफ? देखिए, आपने शायद लेट ज्वाइन किया. मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सुन लीजिए ना प्लीज सुन लीजिए प्लीज, क्योंकि 5000 स्टॉक्स लिस्टेड है. मैं सारे ट्रैक नहीं करता हूँ. एक बार मुझे अरे बाबा एक बार मैंने डिसाइड कर लिया कि ये चीज नहीं करनी है, तो बट मैं आपको सेक्टर का व्यू दे सकता हूँ. मैं ये डिस्कशन शुरू होने से पहले मैं सोच रहा था कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जो नहीं ग्रो करेगा आने वाले 3 साल में. तो मैंने एक एक करके हर सेक्टर पे थोड़ा थोड़ा सोचा, और सबसे जो मैं सोच पा रहा था ये ऑटोमोबाइल ही सोच पा रहा था, लेकिन वो भी बहुत अच्छे से ग्रो करने वाला है. बिकॉज इफ यू लुक एट, नॉट टॉकिंग अबाउट एमआरएफ, इफ यू लुक एट फॉर एग्जांपल बजाज ऑटो, 60% ऑफ देयर रेवेन्यू इज एक्सपोर्ट्स. And I said in the beginning only कि one of the pillars of the economic growth, which is going to be double digit very very soon, is because of the exports. So MRF का मुझे पता नहीं कितना वो एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, कितना डोमेस्टिक करते हैं, उनका स्टॉक कितना मतलब यूनिट्स में इतना बड़ा है. They have not done a split, so that's why liquidity is not there. That's why I don't trade that stock. But अगर आप मुझे पूछोगे तो अगर कि 3 साल बाद एमआरएफ कहाँ होगा, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि भले दूसरी टायर कंपनी से कम हो या ज्यादा हो, लेकिन एमआरएफ अभी के भाव से बहुत ऊपर होगा. मैं 2-4 दिन की तो बात नहीं कर रहा हूँ. वो हाँ, तो बहुत ऊपर होगा. इसमें ये कहना मुश्किल है कि टायर कंपनीज में नंबर 1 पे होगा कि नहीं, या ऑटोमोबाइल एसेसरीज में नंबर 1 पे होगा कि नहीं. देयर योर गेस इज एज गुड एज माइन. ओके, लेकिन जो ग्रोथ आने वाली है, ये जो सेक्युलर ग्रोथ जिसको बोलते हैं कि कुत्ता बिल्ली सब ऊपर जाएगा, बट वो उसमें प्रॉब्लम वही होती है कि जब करेक्शन आएगा तो यू डोंट हैव द कन्विक्शन कि इसको होल्ड करें कि नहीं करें. मैं एमआरएफ की बात नहीं कर रहा हूँ. तो हाँ, इसलिए अगर आपका एमआरएफ पे व्यू लॉन्ग टर्म चाहिए था, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आज जो प्राइस दिख रहा है 1 साल बाद इससे ऊपर ही रहेगा. अच्छा, बहुत सही, धन्यवाद. और मैं थैंक यू. मैं वो बता देता हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का शॉर्ट टर्म व्यू पहले ही बता देता हूँ, उससे पहले कोई पूछे. आपको जैसे पता होगा कि मैं ट्रेंड ट्रेडर हूँ. मैं अगर पहले जो डेली वीडियोस बनाता था, तो उसमें मैं बताता था कि जैसे क्लोजिंग हुई है, अगर किसी ने वो वीडियो कभी एक दिन का भी देखा होगा तो पता होगा आपको कि अगर क्लोजिंग हुई है और इतनी बुलिश क्लोजिंग हुई है, तो मैं कल तो ओपनिंग में मैं मेरे कॉल लेके बैठा हूँ, मैं काफी ओपनिंग अच्छी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. हालांकि नॉर्थ कोरिया ने एक मिसाइल दाग दी है, जापान के पास जाके गिरी. आई डोंट नो कितने लोगों ने ट्रैक किया होगा.
तो ये सब चीजें थोड़ा हार्ट ब्रेक देती रहती हैं, लेकिन मैं बुलिश हूँ कल के लिए भी, अगले हफ्ते के लिए भी, उसके अगले हफ्ते के लिए भी, ट्रेडिंग में भी। तो ये मैं बता दूं आपको, और एमआरएफ का तो मैंने आपको बता दिया। और पूछिए, दूसरा कोई बस सवाल है तो मेरे तरफ पूछिए। से यही था, मुझे बस एक आइडिया चाहिए था रोबोट सेक्टर के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, अब मुझे लगता है आपने सवाल शायद ट्रेडिंग रिलेटेड पूछा था, एमआरएफ से नहीं बचिए। ट्रेडिंग नहीं, लॉन्ग मैंने इन्वेस्टमेंट का ही मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा। तो बस तो लगे रहिए, जुड़े थोड़ा रहिए हाई इंडिया रेट में की ले ग्रोथ लिया था स्टोरी तो में। मैं सोचा कि इसको फ्यूचर अरे अभी मैंने ऑटोमोबाइल का पूरा बोला नहीं तो उसमें 1 घंटा लग जाता। जो ये पूरी स्क्रैपेज पॉलिसी है, स्क्रैप करने वाली जो पॉलिसी है, इससे तो अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ होने वाली है। हमारे यहाँ यूएस जैसा तो है नहीं, बहुत गलत पॉलिसी है गरीब आदमी के लिए। एक गरीब आदमी कार लेता है, उसको 3 बार 4 बार सेल किया जाता है, 5वीं बार तो वो केवल शादी में यूज होती है, बट कार कभी भी ऐसी नहीं होती है कि वो यूज ना हो। जी सर, है ना? तो इसको आप 15 साल बाद स्क्रैप कर दोगे और उसमें फिर डॉक्यूमेंटेशन ये वो करोगे, तो ultimately it is going to fuel growth of new cars and relatively new models and all that, which is going to be very good for stockholders. I don't know how good it will be for the larger section of the society, but very bullish on the auto. Okay. ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। हेलो Next question. हेलो सर। हेलो हाँ, बोलिए ना। सर, मेरा पोर्टफोलियो की रिगार्डिंग क्वेश्चन है। तो मेरा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से पोर्टफोलियो है। अभी मैं मतलब सेक्टर डाइवर्सिफाई करके मैंने पोर्टफोलियो बनाया है। मतलब मैं ऐसा भी कर रहा हूँ। हाँ, मेरा 22 साल उम्र है अभी। तो मेरा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। सवाल बताइए प्लीज। हाँ, तो मेरा सवाल है कि विजनरी स्टॉक उसमें ऐड कर सकते क्या? मतलब अभी ईवी में बज हो गया, ईवी में बज आएगा। नहीं, ईवी में, हाँ, ईवी का बता देता हूँ आपको। हाँ। म्यूट कर लीजिए, थोड़ा सा इको हो रहा है। ओहो, ईवी में जो इंडिया स्पेंड कर रहा है, या जो अपना ओला स्पेंड कर रहा है, या जो मार्केटिंग की जो टीम स्पेंड कर रही है, इट इज नॉट इवन 1% ऑफ व्हाट टेस्ला और जनरल मोटर्स और अदर बिग कंपनीज आर डूइंग। तो कोई ब्रेक थ्रू तो नहीं आने वाला है। एक बैटरी होती है, एक मोटर होती है, एक हैंडल होता है। तो ईवी का में मत, अगर कोई कंपनी जैसे बजाज ऑटो है, तो वो काफी एक्सपोर्ट बिजनेस को कैटर करती है, अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, सो ऑन। अगर आप वहां देख रहे हो कि ईवी अपॉर्चुनिटी है, जो मैंने ऐसे देखा नहीं है, तो आप वहां उस कंपनी में लगा सकते हो। लेकिन ईवी का सोच के कि कोई ईवी का सप्लायर है, कोई ईवी के एसेसरीज बनाता है, या कि कोई ईवी में नया नया जा रहा है, तो ये सब जो है स्कैम्स होते हैं, इसको अवॉइड करिए। अगर आप मार्केट में नए हैं, तो बड़ी कंपनियों, जो सॉलिड कंपनियां हैं, जिन्होंने 10 साल से प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है अर्निंग ग्रोथ का, पी बाई ग्रोथ का, उन पर ही आप लगाइए। सारा डेटा मनी कंट्रोल पे है। एक दिन मैं इसका 101 भी करूंगा कि कैसे डीआईवाई स्टॉक्स की कैसे करनी है लॉन्ग टर्म के लिए। आज तो बस ब्रॉडर बात कर रहे हैं हम लोग। तो किसी छोटी कंपनी में गलती से भी मत लगा दीजिएगा, बड़ी कंपनियों में लगाइए, ईवी या नॉन ईवी। हाँ सर। हाँ, हाँ सर, मैं ये बोल रहा था, नहीं ईवी का कैसा है, जो उसमें पावर सेक्टर में मतलब बेट्स लगा सकते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नहीं, मत करिए। इन्वेस्टमेंट बेट की तरह नहीं होता है। हाँ आप कम रिटर्न सोच के चलिए, और हाँ, ठीक है। और मेरा हाँ, बड़ी कंपनियों में हाँ, लगाइए जिनका और प्रूवन ट्रैक मेरा रिकॉर्ड है। ईवी एक था। और एक मेरा इसका है मतलब कैपिटल मार्केट का है। मतलब अभी ब्रोकरेज फर्म अभी तेज़ी में है ना, तो उसमें भी अभी हाँ, लॉन्ग टर्म में सोच सकते क्या? ऐड मैं अगर मुझे आप पूछेंगे तो मैं, ऐड कर सकते? अरे बड़ा इको हो रहा है भाई, इसको हो, आप थैंक यू। क्वेश्चन पूछने के बाद म्यूट कर लीजिए, मैं बताता हूँ। मुझे अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको ये बजाज ग्रुप के लिए बोलूंगा एट बेस्ट। ब्रोकरेज में इतने कंप्लायंस रिक्वायरमेंट होते हैं, इतनी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट होती है, कि ब्रोकर के पास कोई चांस नहीं होता है। उसको अपनी बुक्स को स्लोली कुक करना पड़ता है। जैसे दाल मखनी पकाते हैं, वैसे वो पकाता है, और आपको जो देखना होता है वो दिखाता है बुल मार्केट में। पिछले 20 साल में देखिए, जो जो ब्रोकर्स बैंकरप्ट हुए हैं, इंक्लूडिंग बीएमआर, या हमारे मित्र हैं नहीं वो कई कई दसियों सब ब्रोकर रह चुके हैं जो सारी बैंकरप्ट हुई। तो ऐसा ही होता है, और इसलिए ब्रोकरेज वगैरह मत जाइए, बड़े बैंक से जुड़िए। I will invite Nikhil. He had promised to speak something. Nikhil, you are there? Nikhil? I think वो म्यूट पे लगा के सो हाँ, गया। थैंक यू सर। ठीक है, आपको और कुछ पूछना है? नहीं सर, अभी मैं हाँ, मेरा यही ठीक है। क्वेश्चन था, एक ही तो एक और था। थैंक यू। हाँ। Anand, I had the next question. Like, can you talk about aviation sector? Do you feel it's going to give returns in आपका coming आवाज नहीं आ रहा है, years? समझ में नहीं आया क्या पूछा आपने। I was asking about aviation. If you can share your सॉरी view in सॉरी, long-term perspective, विच सेक्टर? aviation sector. जब आप वो वर्ड बोल रहे हैं तभी आवाज चली जा रही है, ऐसा हमारा मिसफॉर्चून है। एविएशन बोल रहे हैं क्या? एविएशन?
यस या हाँ अच्छा, अभी आपको हटा दे रहा हूँ, आपको आपको एविएशन की कहानी सुना देता हूँ। सी, अगर आप सेक्टर्स का पूछें तो एविएशन है और होटल इंडस्ट्री है और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। ये तीन पे मेरा पर्सनल मत है, मेरे पर्सनल राय है कि सबसे लेट शुरू होगी। और इनके आप स्टॉक्स देखेंगे, इंडिगो का या स्पाइस जेट का किसी का भी स्टॉक देखेंगे तो किसी तरह के कोई डिस्काउंट में नहीं चल रहा है। आपका पीवीआर जो है वो किसी तरह के डिस्काउंट में नहीं चल रहा है। ओके, तो ये अच्छा बेट मेरे हिसाब से नहीं होगा। अगर आप पीवीआर का, या सॉरी आप तो एविएशन का पूछ रहे थे, अगर आप इंडिगो का भी भाव देखेंगे, इंडिगो हालांकि 72% तो प्रोमोटर्स के पास ही है, ज्यादातर उसका प्रोमोटर की होल्डिंग ही है। फिर इंस्टीट्यूशंस की, रिटेल के पास बहुत थोड़ा है। ऐसे स्टॉक्स में मतलब तेजी भी बहुत तेज आती है और बदली भी बहुत तेज आती है। तो एविएशन में तो मैं बिल्कुल बुलिश नहीं हूँ, होटल में बिल्कुल बुलिश नहीं हूँ एज येट। अभी ऑक्यूपेंसी आपको, किसी भी होटल को लंबे समय तक प्रॉफिटेबल होने के लिए 80-90% ऑक्यूपेंसी चाहिए होती है। अगर आप किसी होटल में जाके पूछेंगे, अभी 60-70% भी नहीं है। लोग सिर्फ अभी भी ट्रैवल इंटरटेनमेंट के लिए नहीं कर रहे हैं, एग्जाम्स के लिए नहीं कर रहे हैं, इंटरव्यूज के लिए नहीं कर रहे हैं, बिजनेस के लिए नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बिजनेस के लिए बहुत ट्रैवल होता था, उसका 1/4 भी नहीं रह गया है, इंक्लूडिंग अभी एज ऑन टुडे, एज ऑन दिस मंथ। तो दिस इज व्हाट इट इज। तो मैं तो नहीं बोलूंगा आपको एविएशन में करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Yeah, sir, Yeah, my question yeah. has three sectors related to it. First is commodity super cycle compared to 2004 to 2008. फिर PSU banks and PSU stocks in specific, thinking of bad bank जो आज ही लॉन्च किया है, और the बोलिए, और हाँ, बोल के पूछिए। and हाँ the तो मैं क्यों चाहता हूँ। renewables ecosystem compared to हाँ future हाँ, prospects. ठीक है ठीक है ठीक है। पहला सुन लीजिए, कमोडिटीज पे मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। कमोडिटीज में अगर आप देखोगे तो काफी सालों से स्टैग्नेशन था। जैसा मैंने अपने लास्ट कमोडिटी वाले स्पेसिस में बताया था कि एक बार जब लोगों को समझ में आ जाता है कि डिमांड सप्लाई का लॉन्ग टर्म इक्वेशन क्या है, तो वो ऐसी कैपेसिटीज क्रिएट कर लेते हैं, चाहे वो आपका कॉपर हो या सिल्वर हो, कि जैसे दाम बढ़ता है तो दे विल बी एबल टू मीट अप द डिमांड बाय वेयर हाउसिंग एक्स्ट्रा और बाय स्टार्टिंग न्यू प्रोडक्शन एंड सो ऑन। जब एब्रप्ट डिमांड बढ़ता है, जैसे ऑयल पाइपलाइन उड़ गई या किसी कंट्री में अनरेस्ट हो गया, तो उसको मीटअप करना मुश्किल होता है, बिकॉज इन सब सारी चीजों को चालू करने में 2-3 महीने लगता है। तो कमोडिटीज में डेली बेसिस पे या आवरली बेसिस पे आपको अच्छे ट्रेंड मिलते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप देखेंगे, 8-10 साल पीछे का देखेंगे, तो इट वॉज इन अ वेरी साइक्लिकल फेज। लेकिन कमोडिटी का साइकिल, जैसा आपने बोला, पहले भी था, और अभी मुझे लगता है फेड के एक्शन की वजह से, इंडिया में भी जो लो इंटरेस्ट रेट है उसकी वजह से, कि बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, ऑलरेडी बढ़ रहा है। आपको अगर एक छोटा सा डेटा पॉइंट बताऊं तो चाइना में एक स्ट्रैटेजिक कमोडिटी रिजर्व करके एक डिपार्टमेंट भी होता है या एक मिनिस्ट्री होती है, और उनका वेयरहाउस होता है हर कमोडिटी का। दे हैव स्टार्टेड रिलीजिंग एल्यूमिनियम, कॉपर एंड सो ऑन टू टू कूल डाउन द डिमांड, द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज। ये कोई भी, इट्स लाइक अ सेंट्रल बैंक एक्शन। ये कोई भी कंट्री तभी करता है जब उनको लग रहा है कि यहां से भी दो गुना 3 गुना जा सकता है। तो कमोडिटी का आंसर मेरा ये है। इसमें आपकी राय अलग हो सकती है या किसी और दर्शक की राय अलग हो सकती है, कि बहुत तगड़ा बुलरन अभी आना चालू हुआ है बस। ओके, दूसरा आपने पीएसयू स्टॉक्स का पूछा, तो दो चीजें आपको बताऊंगा। पीएसयू में जो क्लीन अप हुआ है लास्ट कुछ महीनों में, वो अनप्रेसिडेंटेड है। जैसे अगर आपने लेट ज्वाइन किया हो तो मैंने बताया कि जो मर्जर्स हुए हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है। इंडिया में इतने इजीली, इतना स्मूथली, इतने बड़े स्केल का मर्जर होगा एक्सपेक्टेड नहीं था। 27 से 12 बैंक हो गए, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बोला हुआ है कि 8 बैंक कर देंगे। प्लस उन्होंने बैलेंस शीट सारे बैंकों की पूरी क्लीन अप कर दी है, जितना भी लॉस बुक करना था बुक कर लिया, और अब दे आर इन अ पोजिशन टू लेंड एग्रेसिवली। ओके, सेकेंड इज, गवर्नमेंट ने लास्ट बजट में बोला है, लास्ट इकोनॉमिक सर्वे में बोला है कि दे आर गोइंग टू फोकस टोटली ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग। आप देख रहे होंगे इंफ्रा से रिलेटेड स्टॉक्स जा रहे हैं बहुत तेजी से ऊपर। मैं उनको रिकमेंड नहीं करता हूं, बिकॉज इंफ्रा स्टॉक्स में बाय द नेचर ऑफ द बिजनेस इटसेल्फ कुकिंग बहुत ज्यादा होती है, कुकिंग ऑफ द बुक्स। तो मैं इसलिए वो स्टॉक्स नहीं रिकमेंड करता हूं। लेकिन जो लेंड करेगा इंफ्रा कंपनीज को, एक एक्सिस बैंक है या एक कोटक है या एक एसबीआई है, उसको बहुत ही इजीली एक अश्योर्ड रिटर्न मिलेगा, बिकॉज दीज टेंडर्स, दीज बैंक गारंटीज, दीज लोन्स आर बैक्ड बाय गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट कैश फ्लो। तो बहुत डिफिकल्ट बिजनेस नहीं होता है अगर इकोनॉमिक साइकिल ठीक जा रहा हो। जैसे 2008 में अचानक से कोलैप्स आ गया था, तो उसमें आईसीआईसीआई बैंक ने बहुत सफर किया था। अगर कोई कोलैप्स आ जाता है तो वो बैंकों में थोड़ा दिक्कत आएगी। इसलिए अगर आप मेरा पोर्टफोलियो देखोगे तो मैंने उसमें एचडीएफसी, कोटक, एक्सिस और
SBI में इन्वेस्ट किया हुआ है। SBI को इसलिए मैंने इंक्लूड किया है क्योंकि जो क्रेडिट डिमांड आने वाली है वो SBI को छोड़ के बाकी कोई मीट कर पाए इसकी उम्मीद बहुत कम है। अगर आप बॉम्बे में किसी कंपनी के कंसोर्शियम में जाओगे तो आप देखोगे किसी भी लोन का 70% SBI उठाता है, बाकी 30% में बाकी के बंदर बांट रहे होते हैं। सो इट्स अ वेरी वेरी बिग बैंक, इट्स अ वेरी बिग जायंट। और अगर उसको गवर्नमेंट ने जगा दिया तो अगेन उसको भी यहां से आप 3 टाइम्स देख सकते हो। आपने तीसरा, रिन्यूएबल दूर रहिए, किसी भी बजवर्ड से दूर रहिए। आपको ट्रेडिशनल स्टॉक्स में ही इतनी मलाई मिल जाएगी, इतना कुछ आपको मिल जाएगा कि आपका रिटायरमेंट भी क्या पता सफल हो जाए। ये सब रिन्यूएबल में कर लेता हूँ, ईवी में कर लेता हूँ, US स्टॉक में कर लेता हूँ, चाइना स्टॉक में कर लेता हूँ। ये जो थीम्स दी जा रही हैं आपको, ये आपका पैसा चोरी करने के आइडियाज हैं। आप स्टिक करिए SBI में, HDFC में, रिलायंस में, आप मायूस नहीं होंगे 5 साल बाद, भले आपको रिटर्न कम मिले। भाई अगर आप लॉटरी खेलोगे तो 10 में से एक लॉटरी तो अच्छी निकल भी सकती है यहां से, लेकिन आपको 15-20% का रिटर्न मुझे लग रहा है कि अगले 4-5 साल में, एवरेज रिटर्न की बात कर रहा हूं, मिल सकता है। आपको एक डेटा पॉइंट बताऊं अगर, तो 1995 से लेके 2007-8 तक HDFC का एक टॉप 200 करके म्यूचुअल फंड हुआ करता था जो प्रशांत जैन चलाते थे। अब तो वहां वो CIO बन गए हैं, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर बन गए। पहले सिर्फ फंड मैनेजर थे, 20 साल तक उन्होंने उसको रन किया। उसने 25% पर एनम का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ दिया है 20 साल तक। अगर किसी ने उसमें उस फंड में डाला होता पैसा तो कितने 100 गुना वो पैसा हो गया होता, अलग बात है। ऐसे ही ICICI का एक वैल्यू डिस्कवरी फंड हुआ करता था, बाद में सेबी ने रिक्लासिफिकेशन करा के इन सबके नाम वाम चेंज करा दिया। अभी HDFC 200 जो है वो HDFC 100 बन गया है। तो आप जाएंगे तो मनी कंट्रोल पे सब पुराने नाम वगैरह दिए हुए हैं, बट मैं आपको एक बस ब्रॉड पॉइंट ये बता रहा हूं कि अच्छी कंपनियों में भी अगर आप जुड़े रहेंगे तो होता क्या है कि अच्छी कंपनी में आप पूरा नेटवर्थ डाल पाओगे। जैसे आज मेरा सारा मतलब नेटवर्क जो है ये स्टॉक्स और ट्रेडिंग में ही है, रियल स्टेट में नहीं है, गोल्ड में नहीं है। आप में से बहुत लोग जो है वो 1 लाख या 2 लाख रिन्यूएबल में डाल के खुश हो जाएंगे कि मेरा 5 टाइम्स हो गया, 7 टाइम्स हो गया, लेकिन आपकी नेटवर्क पे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जो नाम आपको बता रहा हूं या जो जो बड़े नाम हैं, अगर आप खुद से भी डिसाइड करोगे, इसमें आप बहुत ही कॉन्फिडेंस से बहुत बड़ा पैसा भी डाल पाओगे अगर आपने डाइवर्सिफाई करा हुआ है तो। और वो आपको भले कम रिटर्न दे रिन्यूएबल से या ईवी से या US स्टॉक से या चाइनीज स्टॉक से, हो सकता है, नोबडी नोज द फ्यूचर, लेकिन आपका जो नेटवर्थ है वो बहुत तेजी से ऊपर जाएगा क्योंकि आपका कन्विक्शन लेवल अच्छा होगा और आप अपनी नेटवर्थ का ज्यादा पैसा इन स्टॉक्स में डाल पाओगे। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है। सर एक और छोटा सवाल, टेक्सटाइल थीम एंड एक्सपोर्ट रिलेटेड स्टॉक। एक्सपोर्ट तो मैं पहले ही बोल चुका हूं कि जिस कंपनी में ज्यादा एक्सपोर्ट है, जैसे फार्मा का पूरा पैक है, जैसे मैंने इप्का के बारे में पोस्ट किया था आई थिंक, मैं जब मुझे कोरोना हुआ था नवंबर में, तो मैंने जितनी भी दवाइयां खाई मैं सबको पलट के देखता था कि भैया बना कौन रहा है। सारी दवाइयां तो मोस्टली इंडिया या चाइना में बनती हैं, तो HCQ जो है वो इप्का बनाती थी। ऐसे ही आप देखो पैरासीटामोल कौन बनाता है। अभी तो ये सब इसके कंजम्पशन कम नहीं होने वाले हैं, तो जो मतलब ये तो मैं कंजम्पशन पे आ गया। एक्सपोर्ट जो है, अगर कोई भी कंपनी अच्छा खासा एक्सपोर्ट मार्केट कवर कर रही है सालों से, केवल इस साल या 2 साल से नहीं, सालों से अगर कवर कर रही है, तो आप उसमें बिंदास जा सकते हो क्योंकि इंडिया का एक्सपोर्ट शेयर भी बढ़ने वाला है। अभी अगर अली पे का आपने एपिसोड सुना होगा, चाइना ने रातों रात उसको बोला कि तुमको हम काट देंगे, डिवाइड कर देंगे। मतलब चाइना इज डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स विच वर अनथिंकेबल। लोग सोचते थे कि वहां पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सेफ है, लोग सोचते थे कि सैंक्टिटी है स्टॉक मार्केट की। अभी मतलब मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन जैकमा ने बहुत महीनों से कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं दिया। मुझे लगता है उनको भी छोटा छोटा मतलब कुछ पब्लिक अपीयरेंस कट करने के लिए बोला गया है, या वो खुद से गायब हो गए हैं, या वी डोंट नो। तो बहुत सा ऐसा पैसा जो है वो FIIs का या पेंशन फंड्स का या इन सब का चाइना से डाइवर्ट होके इंडिया आ सकता है इफ वी हैव आवर एक्ट टुगेदर। एंड आई थिंक जो जिस तरह की संभावनाएं बन रही हैं, जिस तरह की पिच हमने तैयार करी है, सारा नहीं तो थोड़ा बहुत पैसा आएगा। चाइना इज सच अ बिग मार्केट, अगर वहां से थोड़ा सा भी शिफ्ट आता है तो मैन्युफैक्चरिंग में, एक्सपोर्ट में, हर चीज में, शिपिंग कंटेनर्स में, हर चीज में हमको बूस्ट मिलेगा। इसलिए मैंने शुरू में ही बोल दिया कि इतने सारे डेटा पॉइंट्स एक साथ कन्वर्ज हो रहे हैं, दैट मेक्स मी वेरी स्ट्रांगली बुलिश ऑन our index Nifty. Okay, sir. Thank you. Anandji, Ashok here. Okay, next question. I had one question. Okay. In terms of psychology of initial stages when you pick investment stocks. So like I picked up Balaji Amines some time back. It's run up almost 30-40%. But डर ये लगता है कि market correct होगा और निकल जाएगा. Should I get out? Or should I keep it as a investment stock? So ये psychology, how do you manage at the initial level when you picked up an investment grade stock? Thank you.
ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है अशोक जी, आपका सवाल बहुत ही बढ़िया है। और एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, आपका सवाल बहुत बढ़िया है और इस सवाल का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। जब भी मैं किसी स्टॉक में घुसता हूँ तो मैं उसको एक ट्रेडिंग बेट की तरह ही देखता हूँ। कल के कौन सा स्टॉक यस बैंक बन जाएगा, कौन सा स्टॉक डीएचएफएल बन जाएगा, कौन सा स्टॉक रिलायंस कैपिटल बन जाएगा, कौन सा स्टॉक रिलायंस कम्युनिकेशन बन जाएगा, वी कांट प्रिडिक्ट। कितना भी एनालिसिस कर लो, अगर किसी प्रमोट, अरे सत्यम में देखो ना, उन्होंने तो बैंक की जो रिसीट है, बैंक मतलब बैंक में जितने डिपॉजिट डाले थे उसका बैंक का स्टेटमेंट लिया था, ऑडिटर्स को दिखाया था, वो स्टेटमेंट ही फेक था, बैंक में डिपॉजिट थे ही नहीं। तो आप कितना भी एनालाइज कर लो एज ए रिटेल ट्रेडर, आप रिटेल इन्वेस्टर, आप तो सारा ही नहीं एनालाइज कर पाओगे। तो कोई भी कंपनी कल बैंकरप्ट हो सकती है, कोई कंपनी जीरो जा सकती है। तो जब भी मैं इन्वेस्ट करता हूं तो मंथली चार्ट पे मैं एक स्टॉप लॉस लिख लेता हूं। और बहुत लोगों ने इस पे मेरे पोस्ट पे मुझे ट्रॉल भी किया था कि मैं 20 से 25 कंपनियों का वो बनाता हूं। तो किसी ने लिखा कि इंडेक्स ही खरीद लो फिर। मतलब अगर 20 से 25 खरीदने, लोग कॉन्सेंट्रेटेड बेट में ज्यादा उनको ईगो सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मेरा तो 12 गुना हो गया, मेरा 15 गुना हो गया। मैं 20 से 25 रखता हूं। तो अगर मेरा 100 रुपए का पोर्टफोलियो है, 100 रुपए तो सोचने में बहुत छोटा लगता है, लेट्स से अगर मेरा 100 करोड़ का पोर्टफोलियो है तो मैं एक स्टॉक में 2 करोड़ से ज्यादा नहीं डालता हूं। तो अगर वो जीरो भी हो गया तो मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू 98 रहेगी। दिस इटसेल्फ गिव्स लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर आपका बालाजी जो है, अगर आपका जो शेयर मार्केट की जो नेटवर्थ है, या आपकी अगर वाकई में रियल नेटवर्थ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो आप नींद में भी चेक करोगे कि बालाजी अमीन का क्या हुआ, किसी प्लांट में आग तो नहीं लग गई। बट इफ इट इज जस्ट 1 और 2% ऑफ योर पोर्टफोलियो, तो अगर वो 30% करेक्ट भी कर, 50% भी करेक्ट हो गया अगर, और आपका 2% ऑफ द पोर्टफोलियो है, तो कितना हो जाएगा, आपको 1% का लॉस होगा, राइट? That gives lot of confidence to hold it. That is one, having the lot size such that it is not more than 2% of your net worth. So that's why 2 to 3%, कुछ तो उसमें बढ़ भी जाएंगे तो उनका। एंड अगर आप किसी म्यूचुअल फंड की जो फैक्ट शीट जाके देखोगे मनी कंट्रोल पे, तो सारे म्यूचुअल फंड भी 30 से 50 स्टॉक्स होल्ड करते हैं। टीवी पे जब वो आते हैं तो बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड बेट लो और वॉरेन बफे मेरे मामा हैं एंड सो ऑन, लेकिन एवरीबडी टेक्स डाइवर्सिफाइड बेट्स। ओके, तो मैं आपको भी ये सजेस्ट करता हूं कि बालाजी हो या कोई भी अमीन हो, आप देखो कि उसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट है एज कंपेयर टू योर टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू, वो 2 से 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और स्टॉप लॉस लेते टाइम ही लिख लीजिए। इंटायर लाइफ इज अ ट्रेडिंग बेट, है ना? आप अगर बच्चे को स्कूल भी भेजते हो तो आप सोचते हो ना कि अच्छा इसका तो ग्राफ ऊपर जाएगा, ये तो आईएएस बनेगा एंड सो ऑन, राइट? लेकिन यू हैव अ स्टॉप लॉस, उसके लिए थोड़े सेविंग भी करके रखते हो कि नकारा निकल गया तो ऐसे ऐसे करेंगे, एक दुकान दिला देंगे, राइट? तो इंटायर लाइफ इज अ ट्रेडिंग बेट। ओके, हैव आई आंसर्ड? Yes, got it. Thanks. नेक्स्ट क्वेश्चन। Thank you, sir. May I ask a Sir, question? Sir, I'll be just very quick. I have meeting at 10 o'clock. Sir, what's your view on defense sector? And if you are bullish on that, then would you recommend any shares from that? And one more thing I would like to add. Sir, आपने जो अभी बताया ना कि entire life is मतलब उसको कोई लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे देखते रहना नहीं चाहिए कि ये मैंने शेयर कर दिया वो छोड़ दिया। आपने एक दिन बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि मैंने पैसा यस बैंक में गवाया है, गीतांजलि में गवाया है और सुनील हाईटेक में बहुत ज्यादा पैसा गवाया है। सो दैट्स अ बेस्ट सजेशन दैट यू हैव गिवन। बट या सर, सर आई वुड टू ये हियर जो समथिंग फ्रॉम ये जो डिफेंस सेक्टर। ये जो ज्ञान है ना, ये मुझे भी गंवाने के बाद ही आया है ना। जब आपका दिल टूटता है तभी तो आप नई चीज सीखते हो, है ना? सही सही सर, मैंने हाँ। रेस बैंक में नहीं गंवाया, मैंने रिलायंस पावर में गंवाया। मैंने भी उसको 2 रुपए तक वेट किया, झूठ नहीं बोलूंगा आपसे। तो दिल टूटता है तो भी आप नई चीजें सीखते हो। ठीक है, अभी अभी अपन बात करेंगे आपका डिफेंस की। सी द प्रॉब्लम विद डिफेंस सेक्टर इज इट इज इट इज सच अ ह्यूज सेक्टर एंड it is such a huge sector and it requires so much of capital that mostly the companies which are active are either government owned, जैसे आपका डीआरडीओ है या एचएएल है या आपका इफ आई कैन से इसरो आल्सो इन डिफेंस, ऑल्दो इट इज नॉट लाइक प्योर डिफेंस। या दूसरा जो प्राइवेट कंपनीज है, दे आर नॉट लिस्टेड। अब जैसे अगर आप देखोगे टाटा ग्रुप की 5 कंपनियां हैदराबाद में है। हैदराबाद में एक डिफेंस का एसईजेड है, कितने लोगों को पता होगा मुझे पता नहीं। अगर हैदराबाद से कोई है, आदि बटला में एक डिफेंस का एसईजेड है, वहां पे टाटा एरोस्पेस है। और 5 कंपनियां हैं। कुछ बड़े फैंसी फैंसी नाम भी है, एक तारा एरोस्पेस है, समथिंग समथिंग। एंड एचबीएल एल्टा है, ये भी टाटा की कंपनी है, मतलब टाटा ने एक्वायर कर लिया है।
सिमिलरली एक लिस्टेड स्पेस में एक कंपनी है जो मैं जानता हूं, और इसमें अभी रिसेंटली एलएनटी ने भी स्टेक बाय किया है 10-11%। उसका नाम है एस्ट्रा माइक्रोवेव, और बहुत अच्छा मैनेजमेंट भी है। बट अभी वही है ना, आप इतना रिमोट में चले जाओगे, जब आपके सामने ब्रिटानिया रखा हुआ है, जब आपके सामने एचडीएफसी बैंक रखा है, एशियन पेंट, लोग अपना घर ऐसे पुताई कराएंगे ना कि सामने वाली दीवार अलग कलर की, पीछे वाली दीवार अलग कलर की। जब पैसा आ जाता है ना, तो लोग यही सब करते हैं, और पैसा आने वाला है लोगों के हाथ में। तो डिफेंस में तो किसको टेंडर मिलेगा नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा माइक्रोवेव से अच्छी कंपनी है। और ये भी नहीं बोलो, जब बुल रन आएगा तो डिफेंस भी ऊपर ही जाएगा, कितना ऊपर जाएगा कहना मुश्किल है, बट मोस्ट ऑफ द गुड कंपनीज आर नॉट इन लिस्टेड स्पेस इन डिफेंस। Okay, thank you very much, sir. Sir, as you said about next 2-3 years is going to be massive bull run. So if we pick about 3-4 sector which is surely going to boom, so which are the sectors will be your first picks? As you said, aviation or नहीं the भैया, hotel मैंने विषय industry. नहीं बोला, नहीं विषय So नहीं बोला। sir, these are not as you said. So what are हाँ। the ones or 3-4 sector which you probably recommend? One of ठीक, course is the banking. मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूँ बैंकिंग सेक्टर पे। बैंकिंग सेक्टर पे बुलिश होने का 3-4 रीजन है। ओके, पहला रीजन तो ये है कि जो बैंक्स का पेनिट्रेशन है वो इस गवर्नमेंट के सेकंड टर्म से बहुत तेजी से बढ़ा है। अगर आप कोई भी डेटा पॉइंट उठाओगे, गरीब आदमी के अकाउंट खुलने चालू ही नहीं हुए, गरीब आदमी अब पैसा ट्रांसफर कर पा रहा है, अपनी सैलरी अकाउंट में ले पा रहा है, अकाउंट से ट्रांजेक्ट कर पा रहा है। ये सारी चीजें बैंक बहुत अच्छे से बुनाने वाले हैं बाई सेलिंग थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स, जिसमें बैंक को बहुत एक्सपीरियंस है। ओके, तो आप गए अपना पैसा का कुछ करने के लिए, और आपको सामने दिख रहा है कि आप इंश्योरेंस भी बाई कर लो, हेल्थ इंश्योरेंस भी बाई कर लो, या आप ट्रैक्टर लोन बाई कर लो, ये सारा हो रहा है ऑन द ग्राउंड। इनफैक्ट इफ आई टॉक अबाउट एचडीएफसी बैंक, अभी उन्होंने अपनी इन्वेस्टर की कॉल में बोला है शायद, या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि अर्लियर दे वर कवरिंग 1 लाख विलेजेस, नाउ दे आर नेक्स्ट ईयर ओनली, इन 1 ईयर ओनली दे आर गोइंग टू कवर 2 लाख विलेजेस इन इंडिया। आई वंडर, शायद 5 लाख टोटल गांव है, उसमें 25,000 से ज्यादा की आबादी वाले शायद 2.5 लाख ही गांव है। तो लाइक मोस्टली देयर बी इन एवरी विलेज a private company. That kind of expansion they are doing. Their entire focus is village. Okay. ये अर्बन आप सोचते हो कि अरे ये तो बड़ा खराब बैंक है, मैं जाता हूँ तो मुझे कोई चाय नहीं पिलाता। They are not focusing on you. You are not the target customer. Okay. Okay. So what I was saying, so banks में मैं heavy weight हूँ। पहला तो ये जो डिजिटाइजेशन हो रहा है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट बैंक्स को मिलेगा। गवर्नमेंट की जो इतनी हेवी बोरोइंग होने वाली है, वो टॉप के बैंक्स हैं वही केटर कर सकते हैं। आपका एक आरबीएल या इंडसइंड बैंक जिसकी एक टांग टूटी हुई है, वो नहीं कर पाएगा। ओके, मतलब उसके एनपीए का बोझा है, अपनी लिक्विडिटी मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो रहा है, अब का तब लगा हुआ है। प्रॉब्ली जैसे कोटक ने भी इंटरेस्ट शो किया था इंडसइंड बैंक, मर्जर हो जाएगा, वो सारी चीजें होंगी। बट जो बड़े बैंक हैं, एस्टेब्लिश बैंक हैं, इंक्लूडिंग एसबीआई, इनको इसका बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। 2 बता दिए, तीसरा मैं भूल गया। सर Anyway, 2 ही बैंकिंग एक बाकी है। सेक्टर बताया, और सर आई हाँ, थिंक बता रहे। तो मैं बैंक से सबसे ज्यादा बुलिश हूँ। ठीक है। दूसरा, जो कमोडिटी रिलेटेड स्टॉक्स हैं, जैसे स्टील की कंपनियां हैं, आपका एल्यूमिनियम की कंपनियां हैं, इन मतलब कोई भी जो हार्डकोर कमोडिटी को प्रोसेस करके आगे देती है ना, उस पर मैं बहुत बुलिश हूँ। बिकॉज द टॉप लाइन एंड द एंटायर क्वांटिटी रिक्वायरमेंट इटसेल्फ इज गोइंग टू गो अप। तो उसका टॉप लाइन बढ़ेगा, और इवन एट कांस्टेंट मार्जिन्स और लोअर मार्जिन्स कंपनी विल हैव हायर स्टॉक प्राइस। ओके, तो कमोडिटी बता दिया, बैंक बता दिया। मैं शुरू में सोच रहा था कि कौन सा सेक्टर बताऊं कि ये नहीं ग्रो करेगा, तो एक भी एविएशन छोड़ के कुछ दिमाग में आ नहीं रहा था। तीसरा भी आपको बता देता हूँ कमोडिटी पर। हाँ, तीसरा पीएसयूज। दोस्तों, पीएसयूज पे बहुत तगड़ी नजर रखिएगा। हालांकि मैंने वो पेट नहीं लिए, बिकॉज इट इज स्लाइटली शॉर्टर टेनर बेट, और मैं जनरली मैं एज अ मैटर ऑफ रूल मैं शॉर्टर टेनर बेट में नहीं लगा रहा हूँ। पीएसयूज का गवर्नमेंट इंटेंट बताया भी है कि दे आर गोइंग टू डू लॉट ऑफ मर्जर्स, दे आर गोइंग टू डू लॉट ऑफ आईपीओज, एंड तो जब तक वो ड्रामा फिनिश होगा, इट विल बी लाइक 2 times 3 times बिकॉज ऑफ द वेस्टेड इंटरेस्ट, बिकॉज ऑफ द इनसाइडर्स एंड सो ऑन। तो आपका बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, ओएनजीसी है, इंक्लूडिंग सम ऑफ द पीएसयू बैंक्स, ये सारा ऊपर जाएगा। तो ये तीसरा सेक्टर आपने जो पूछा, तो ये भी अच्छा खासा ऊपर जाएगा मेरे हिसाब से। एंड आई हैव द राइट टू बी रॉन्ग। You have every right to be wrong, sir. चलिए जल्दी करते हैं दोस्तों, 1 घंटा होने वाला है। मुझे लग रहा है बाकी लोग बोर भी हो रहे हैं, कोई 100 का साइन भी नहीं बना रहा है। Anand, one question, right? So if someone is allocated, usually around 80-90% in 3 लोग एक साथ बोल रहे हैं। hello, can you hear me? हाँ। Yeah, मेरा question अगर कोई है जो मतलब if we allocate 80-90% of our allocation in equity, और लास्ट मार्च में जो हुआ था, right, around 30-40% of drawdown in investment, I mean कि अचानक valuation down हो गया, तो at that moment, it's very easy to say right now, but at that time to handle that, that suddenly 1 crore portfolio goes down to 60 lakhs, right? It's not easy to handle. So do you hedge? Do you suggest any kind of an hedge in this? नहीं, वो देखिए, मार्च में
मतलब मैं जितने लोगों को जानता हूँ, मतलब मैं एडवाइस तो किसी को नहीं करता हूँ, बट जिन लोगों से मैं क्लोजली बात करता हूँ, 10-12 ऐसे लोग जो बहुत ही अजीज हैं, सबकी हालत खराब हो गई थी Right, मार्च right. में। So लेकिन मैंने, अगर आप में से कोई उन लोगों में से, मैंने सबको यही बोला था कि बने रहो, सेल नहीं करना। सी द ब्यूटी ऑफ होल्डिंग गुड स्टॉक्स इज दैट यू हैव एंड अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इज है कि आप सोचते हो कि यार ये जीरो नहीं जाएगा, वो कहीं ना कहीं से कन्विक्शन आता है। अगर अभी अदानी में 50% का करेक्शन आ जाएगा तो आप नहीं होल्ड कर पाओगे, लेकिन अगर आपका पूरा पोर्टफोलियो है, लेट्स से इंडेक्स है, इंडेक्स में अगर आता है 30-40% का करेक्शन, तो आपको पता होगा कि यार यहाँ से अभी अब अनदर 50% नीचे नहीं जाएगा, और जाएगा भी तो इट विल बाउंस बैक, because we are creating new Australia every year, because of we having very low penetration of डीमैट बैंक्स एंड सो ऑन, जितने भी रीजन मैंने भी आपको बताया। तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है, ताकि आप एक ही स्टॉक में ना घुस जाओ, क्योंकि स्टॉक्स लाइक यस बैंक जब गया तो ऊपर ही नहीं आया, दम ही तोड़ दिया। right. या हाँ, तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है, और अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। अभी लॉन्ग टर्म के लिए देखता हूँ ना, स्मॉल केस में, अच्छा ये मेरा तो ये 72 टाइम्स चला गया, मेरा तो 80 टाइम्स चला गया। वो लोग के 1-1, 2-2 लाख के पोर्टफोलियो होते हैं, उससे आप जेलस मत हो आप। इसलिए मैंने अपना पोर्टफोलियो पब्लिक करके रखा हुआ है कि अगर आप कोई देखता है तो, अगर आप नए हो तो उसी तरीके से ऐसे स्टॉक्स में लगाओ जिनमें आपको, जैसे मुझे पता है एशियन पेंट्स का, कि लोग पुताई कराएंगे तो एशियन पेंट का डब्बा जरूर देखेंगे, Right, right. है ना। मोनोपोली है Anand, ना, Yeah, मोनोपोली नहीं, डोमिनेंस है ना correct, मार्केट correct. में। No, my question is because I know one of Anand, my can I relative, speak now? right, who is around 65 years old, right, but he is holding Piramal shares since like maybe last 30 years, right, and suddenly he showed the Piramal say went down to 3,000 to around maybe 600, I think, during March. So for those kind of people, right, who are above 60, and they very difficult for them, right, to handle that psychologically even, that I mean नहीं, ऐसा मैं आपको बताता हूँ, ये हम लोग सोचते हैं, अब मैं भी थोड़ा बूढ़ा हो गया हूँ, तो आपको अपने दिल कभी किसी का बूढ़ा नहीं होता है, yeah, ओके। मैं 40 साल की मेरी उम्र हो गई, दिल मेरा भी 16 साल का ही है। माई डैड इज 74 एंड ही हैज अ वेरी लार्ज पोर्टफोलियो, ही डजंट टेक माय एडवाइस आल्सो, mm-hmm. बट ही वाज लार्जली अनअफेक्टेड। Okay, okay, तो वही ये जो आपको क्रक्स बता रहा हूँ, अगर आपके पास सिर्फ पिरामिल है तो आपकी फट yes, yes, जाएगी, yes, ठीक है, mm-hmm. क्योंकि यू डोंट नो कि पिरामिल को फंडिंग मिलेगी कि नहीं, वो ऊपर आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन आपके पास अगर पूरा इंडेक्स है, या आपके पास बड़ा बास्केट Right, है जो कि म्यूचुअल फंड्स होल्ड करते हैं, जैसा मैं एडवाइस करता हूँ, तो आप होल्ड कर पाओगे दोस्त। और आप अगर 30 साल से होल्ड कर रहे हो, तो पिरामिल में तो आपको 50 गुना वैसे ही मिल चुका होगा, yes, राइट, yes, इफ आई एम नॉट correct, रॉन्ग। correct, that's true. तो नहीं होता ऐसा। आप वंस यू सी, ऑल द पेन इज इन द इमेजिनेशन ओनली। जो जो रियल में सफर करता है ना, जो 65 साल का Mm-hmm. है, वो हमसे और आपसे ज्यादा पेन लाइफ में वैसे ही देख चुका है, उसको उतना पेन नहीं Right, होता है। right, right. So diversification is the key, right? I mean, basically. एग्जैक्टली, Thanks, sir. एग्जैक्टली। Thanks. Sir, your take on gems and jewelry sector, particularly one stock everybody या says it ज्वेलरी में going बहुत ज्यादा expensive. स्कैम होते हैं, मैं ट्रैक नहीं करता हूँ, मैं नहीं ट्रैक करता हूँ। हाँ आनंद, हेलो आप, हाँ, am I audible? हाँ 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 आनंद, हेलो हेलो हाँ हाँ, बोलिए ना। हाँ आनंद, I have been going through all your tweets and I follow you religiously. तो मेरे को अरे तो कुछ, सुनिए ना, जब रिलीजियसली फॉलो करते तो लाइक और रिट्वीट क्यों नहीं करते यार। मैं इतने पंखा भी नहीं चलाया हुआ मैंने, और इतनी गर्मी में बोल रहा हूँ ताकि आपको सही से सुनाई दे, और ये बोल के कोई आपको ब्राउनी पॉइंट नहीं मिलने वाले हैं कि आप मतलब फॉलो करते हैं। तो लाइक करो ना, रिट्वीट करो यार। मैं मैं तो लाइक देखो फ्री करता में हूँ, थोड़ी मैं ना लाइक बात कर रहा करता हूँ। हूँ, नहीं मैं नहीं, लाइक झूठ कर, नहीं, झूठ नहीं, झूठ नहीं। अच्छा ठीक है, मैं लाइक दिखाओ। करूंगा आगे, नहीं आगे लाइक करूंगा, हाँ करूंगा। देखो ये आ गया ना, आगे लाइन पे। तो यार ऐसा क्यों करते हो यार, फ्री में कोई क्यों देगा तुमको। नहीं नहीं, मैं और लाइक अगर करता देगा हूँ। भी तो फिर ऐसा मत बोलो ना कि मैं तुम्हारा बहुत फॉलो करता हूँ। क्या फॉलो करते हो। अच्छा मैं चलो लाइक बोलो। करूंगा, चलो ठीक। ओके, हाँ मैंने बोलो। कि आपके सारे डिस्कशन से मेरे को लग रहा है कि एक तो आपने आंसर कर दिया कि डाइवर्सिफाई करो अराउंड 30 to 50 स्टॉक्स, सो दैट आई हैव ऑलरेडी डन। अच्छा सौरभ तुम बोल रहे हो क्या, मुझे लगा कबीरा बोल रहे हो, उनकी भी आवाज आ रही थी। नहीं सौरभ, आप तो मेरे दोस्त हो। हाँ सॉरी सर, हाँ तो मैं बेकार ही बोल दिया, सॉरी यार। तो 30 to 50 स्टॉक्स दैट आई हैव डन। लेकिन व्हाट आई फील कि आप जो 3-4 थीम जो प्रमोट कर रहे हो, एक तो है बैंकिंग एंड क्रेडिट जो इंक्रीज हो रहा नहीं है। नहीं सौरभ, सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट हूँ। मैंने कोई थीम, मैं सिर्फ एविएशन, हॉस्पिटैलिटी और एंटरटेनमेंट को छोड़ के, और जेम्स एंड ज्वेलरी को छोड़ के, हाँ बाकी सारे ऊपर जाएंगे। और कौन सा ज्यादा ऊपर जाएगा आई डोंट नो। मैंने अपना बताया कि मैं किस पे ज्यादा हैवी वेट हूँ। ओके, तो मेरा 3 सेक्टर है। अब इसके बारे में आप काफी कुछ बोल चुके हो। जैसे आपने एक बैंकिंग का बोला, तो वो तो आई एम ऑल्सो बुलिश। लेकिन सेकंड इज व्हाट आई फील कि जो
इंडियन कंजम्पशन है, बीट नेस्ले और डॉक्टर लाल जो भी हो इन जनरल, वो और एक जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वेदर इट्स आईटी, फार्मा, स्पेशलिटी केमिकल्स, ये तीन सेक्टर में मैं कोशिश कर रहा हूँ. तो व्हाट इज योर व्यू, ये तीन कैसे आर दे गोइंग टू बी सेक्टर लीडर्स इन, और सेक्टर जहां पे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा इन नेक्स्ट 10 years डाउन द लाइन? आर यू आस्किंग स्पेसिफिकली फॉर डॉक्टर लाल? नो नो नो, आई एम सेइंग कि कंजम्पशन बेस्ड इंडिया का हाँ, अरे कंजम्पशन. कंजम्पशन में हमारा हमारा जो ये हेल्थ केयर का जो कंजम्पशन है, ये 3 to 4 टाइम्स हो जाएगा बहुत जल्दी. आप अपने आसपास देख ही रहोगे, लोग ज्यादा पॉलिसी ले रहे हैं, लोग ज्यादा, जरा सा भी कुछ होता है तो ज्यादा टेस्ट करा लेते हैं. इट इज ऑल गोइंग टू, द पैरानोया इज नॉट गोइंग टू डाई अवे. सो आई थिंक हमारा जो कंजम्पशन है वो हेल्थ केयर में बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, एंड दैट इज बीइंग प्राइस्ड इन एज वी टॉक. अभी इसका ही देख लो तो, और फॉर एग्जांपल अपोलो हॉस्पिटल्स देख लो या कोई भी, इट इज गेटिंग प्राइस्ड इन फ्रंट ऑफ आवर आईज. तो या आई एम वेरी बुलिश ऑन दैट. एंड सेकंड थीम इज जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है अपार्ट फ्रॉम आईटी, अब इंडिया के तरफ फार्मा आ रहा है और स्पेशलिटी केमिकल्स लाइक दीपक नाइट्राइट, वो सब, तो वो सब भी काफी बुलिश है फॉर नेक्स्ट 10 years, राइट? बिकॉज चाइना से लोग इधर मूव कर रहे हैं, राइट? सी सौरभ, 10 years बोलना मुश्किल है, बट लेट्स से 3 to 5 years, and we'll keep evaluating every 1 or 2 years ना. Okay, then you have to keep keeping this, ये spaces आपको हर year या 6 months में रखना पड़ेगा, so that we can, you know. अरे यार, अगर 400 लोग अटेंड कर रहे हैं, अगर मेरे ट्वीट्स पे 400 लाइक आना शुरू हो जाए, मैं रोज करूंगा एक नए टॉपिक, दैट आई कैन प्रॉमिस. बट जो लोग सुन रहे हैं वो प्रॉमिस करने को रेडी नहीं है ना, लाइक बहुत महंगा होता है. चलो, थैंक यू आनंद. बट आई विल कीप डूइंग इट यार, आई एंजॉय इट. कबीरा बोलिए. हाँ सर, अभी फार्मा में लगभग सब में लगभग 30% 40% का डिस्काउंट हो गया शेयर में. मुझे डिस्काउंट हुआ तो खरीदिए, सबसे पहला लंबे समय के लिए खरीदना है तो. नहीं, मैं पहला सर की रीजन जानना चाह रहा था कि इतना क्यों गिरावट आया था. हाँ देखिए, रीजन का कैसा है कि बड़े बड़े जो जैसे इंडिया जो है एमएसआई इंडेक्स का भी पार्ट है एंड सो ऑन, तो बड़े बड़े जो पेंशन फंड्स होते हैं या बड़े बड़े एफआईआईज होते हैं या बड़े बड़े अपने डीआईआईज भी होते हैं, उनका एक सेक्टर स्पेसिफिक एलोकेशन भी होता है. और अगर उनका ओवरऑल सेक्टर में रिस्क बढ़ गया, इंडिया इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द बास्केट, तो दे माइट सेलिंग. और जब एक सेल करता है, इट क्रिएट्स अ ट्रेंड, बाकी लोग भी सेल करने लगते हैं. इसको आप लूजली आप बोल सकते हो कि सेक्टर रोटेशन होता है फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो जैसे फार्मा में बहुत रनअप हो गया, मेटल्स में बहुत रनअप हो गया, तो हो सकता है अभी बैंक्स की बारी हो. निफ्टी इज मेकिंग न्यू हाइज एवरी डे, राइट? बट बैंक निफ्टी इज नॉट मेकिंग. सो द डे बैंक निफ्टी स्टार्ट्स मेकिंग न्यू हाई, I'll be very joyous because I am betting more on banks. तो ये सेक्टर रोटेशन होता रहता है, उसके लिए आप बता नहीं सकते कि रीजन क्या है एग्जैक्ट. हेलो सर, लेकिन तो उसमें भी सब नहीं गिरा था. अब जैसे डिविज लैब गिरा ही नहीं, वो हाई पे हाई मार रहा था. हाँ, तो वो थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक हो गया ना कि डिविज लैब क्यों नहीं गिरा, वो उसका एक्सपोर्ट कितना है. आई थिंक इसका काफी डिविज लैब का तो एपीआई बिजनेस है और काफी एक्सपोर्ट बेस्ड ही है, तो डिपेंड करता है काफी फैक्टर्स पे. अभी इंडिविजुअल स्टॉक डिस्कस करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा. ठीक है सर. इसमें कबीरा ये जी, सवाल है, मैंने आपको बोला था लाइक रिट्वीट करने के लिए, आप चालू कर दीजिए आज से. सर अभी नया जुड़े हम आपसे. अरे तो आज ही से शुरू करिए ना, आज तो मैंने 50 ट्वीट किए हैं. हाँ सर, अरे मजाक कर रहा हूँ यार, नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं. चलो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. आनंद भाई सर एक बात पूछना रुकिए चाहता सर. हाँ रुकिए भाई, रंजीत जी रुक जाइए, इनको टाइम दीजिए. हाँ बोलिए. हाँ सर, जैसे अब कोई भी स्टॉक फार्मा का करेक्ट हो रहा था, ठीक है, तो मैं फंडामेंटल से ज्यादा टेक्निकल सोचता हूँ. मतलब मेरा कंफर्ट लेवल टेक्निकल पे ज्यादा रहता है. चार्ट देख के, मतलब मैं कोई भी ट्रेड लेता हूँ या उसको छोड़ता हूँ. अच्छा सुनिए ना कबीरा जी, कबीरा आपका नाम इतना बढ़िया ना, कबीरा नाम याद है आपको? उसमें था अंदाज अपना अपना में, नहीं अंदाज अपना अपना में भी था, और उसमें भी था जवानी है दीवानी, हेरा फेरी में भी था कबीरा स्पीकिंग, याद है? नहीं याद? हाँ सर, ये पहले आप सुनिए मेरी बात सुनिए. मैं टेक्निकल में थोड़ा कच्चा हूँ, नेक्स्ट स्पेसिस जो करूंगा उसमें टेक्निकल स्पेशलिस्ट को बुलाऊंगा और आपका टेक्निकल वाला एड्रेस करते हैं, जल्दी करेंगे. सर एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए. बोलिए. मेरा ये कहना है कि जैसे मैं टेक्निकल को देख के कि मतलब 50 DMA पे सपोर्ट ले सकता है या 20 DMA पे सपोर्ट ले सकता है, ठीक है, मैंने उस हिसाब से ट्रेड लिया, अब वो और गिर गया. इस तरह से मतलब
कभी कभी क्वेश्चन क्या समझ है? में नहीं आता। मेरा क्वेश्चन सर यही था कि जैसे ऑरो फार्मा लगभग 1000 से वो क्वेश्चन क्या है? साढ़े, सर तो सुनिएगा तब ना। बोलिए। जैसे ऑरो फार्मा लगभग 1000 से लगभग 650 के आसपास आ गया था सर, तो वहां पे टेक्निकल बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो ये जो सेक्टर रोटेशन का आपने बात किया है सर, तो ये सिर्फ हम, जैसे आप चूंकि एक्सपीरियंस है तो आपको पता, हमें कैसे पता चलेगा सर कि ठीक है, ये रोटेशन क्वेश्चन है ना, हो रहा है? सुनिए, सुन लीजिए। पहली तो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं तो 50% का ही सक्सेस रेट होता है किसी को भी, चाहे वो पॉल ट्यूडर जोन्स हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो। एक स्टॉक गिर गया, उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो पानी पीजिए ठंडा और आगे बढ़िए, उस पर ज्यादा ओवर एनालिसिस मत करिए। ठीक है, पहला। और दूसरा, एक्सपीरियंस के साथ थोड़ा थोड़ा आप सीखते हो। जैसे आपने पूछा ना कि हमको कैसे पता चल गया, हमको भी पता नहीं चलता है, लेकिन जो ज्यादा लोग एक्सपीरियंस है, जो टेक्निकल करते हैं दिन भर, उनको पता रहता है कहाँ सपोर्ट लेगा, कहाँ रेजिस्टेंस लेगा। मैं ऐसा आपको एक सेशन कराऊंगा, आप जरूर अटेंड करिएगा। ठीक है जी, थैंक यू अनिल सर, भाई थैंक यू सर। हाँ हाँ, रंजीत मैं जी पूछ बोलिए। मैं पूछ रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म स्टॉक के लिए स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए? 30%, 40% क्या होना चाहिए? मैं तो 180 या 280 रखता हूँ मंथली ग्राफ पे। 180 या 280? ओके। और एक्चुअली खरीदना मुझे भी ऐसे पता पॉइंट पे हूँ कि वहां पे ज्यादा करेक्शन की उम्मीद ना हो। ओके 80 यार मुझे पता नहीं है इससे थोड़ा सा। उस पे एक वीडियो बनाया हुआ है, कहिए तो ओके आपको। हाँ, चलिए ठीक है, मैं देख लेता हूँ। थैंक यू। हेलो बिल्कुल। आनंद, हाँ, गुड इवनिंग, विशाल बात कर रहा हूँ। ठीक, बोलिए ना विशाल जी। मेरा एक सवाल है। अभी आपने हाँ, बहुत सारे सेक्टर पे बात किया, ठीक है। अभी मैं भी थोड़ा चार्ट्स वगैरह डालते रहता हूँ, ठीक है। बट इंफ्रास्ट्रक्चर अबाउट, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या होता है, मैं ज्यादा भरोसा नहीं रखता हूँ, ठीक है, इंफ्रा पर। क्योंकि बट मैं अभी थोड़ा घूमा हूँ, मुंबई यहाँ उधर गया हूँ, तो वहां पर मुझे दिखाई दिया कि बहुत सारे काम चालू है, ठीक है। जैसे L&T, IRB, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है, ठीक है। बट इंफ्रा हम्म। में सीमेंट सेक्टर, सीमेंट लगता है, स्टील लगता है, ठीक है। वो सारे स्टॉक भाग रहे हैं, ठीक है। हाँ, जिन्होंने टेंडर लिया है वही स्टॉक वहीं पर ही है, ठीक है। अभी तक उनमें मूवमेंट नहीं। वो इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो स्कैम से भरपूर होते हैं। क्या होता है उसका भी आपको बता देता हूँ, अभी टाइम कम पड़ जाएगा, लेकिन एक कहानी सुन लीजिए, क्योंकि आप मेरे अभिन्न मित्र हैं तो आपको सुनने का पूरा हक है। तो क्या होता है कि जो इंफ्रा की कंपनियां होती हैं, हर हर प्रोजेक्ट के लिए आपको एक नई कंपनी फ्लोट करनी पड़ती है। जैसे अगर L&T जो है हैदराबाद मेट्रो बना रही है, तो L&T हैदराबाद मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 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 ऐसे करके कंपनी हो जाती है। वो इसलिए बनानी पड़ती है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रोजेक्ट फेल होने के चांसेस काफी होते हैं। अगर प्रोजेक्ट फेल होता है तो उस कंपनी की बैलेंस शीट जो है मेन कंपनी को ज्यादा अफेक्ट ना करे, तो जितना पेड अप कैपिटल होता है केवल उतना ही अफेक्ट होता है, और बाकी तो बैंक का लोन होता है। ओके, पहली चीज तो ये। तो जब आप ऐसी लोन क्रिएट करते हो और उसके बाद फिर जब आप प्रोजेक्ट शुरू करते हो, तो इंडिया में कैसा होता है कि टेंडर मिनिमल को ही दिया जाता है। एक तो टेक्निकल टेंडर भी होता है और एक मिनिमम जिसका टेंडर होता है उसको दिया जाता है। तो जैसे मेट्रो रेल की अगर बात करें तो L&T का मिनिमम का टेंडर हो गया तो वो दे दिया। ओके, बट जब आप मिनिमम कोट करते हो तो आपके पास मार्जिन की ज्यादा गुंजाइश तो होती नहीं है, और अल्टीमेटली एवरीबॉडी वांट्स टू अर्न मनी। ये चीज गवर्नमेंट को नहीं समझ में आती है। यस, तो वो लोग क्या करते हैं कि उसमें ऐसे क्लॉजेज होते हैं जिसकी वजह से आप ओवरहेड चार्ज कर सकते हो। ओके। ठीक है, अब मेरे को बोलने दीजिए। जैसे कि अगर आप हैदराबाद कभी गए होंगे तो वो विधानसभा के सामने से जाएगी या विधानसभा के नीचे से जाएगी, ये सब को लेके बहुत आर्ग्यूमेंट हुआ था जब केसीआर पहली बार आए थे। तो वो सब में L&T ने भरपूर बिल बनाया। दूसरा ये होता है कि जो कंपनियां होती हैं वो मजबूर हो जाती हैं कि जो नॉन अग्रीड आइटम्स होती हैं उनकी गोल्ड प्लेटिंग करती हैं। गोल्ड प्लेटिंग एक विकिपीडिया में टर्म है, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म के लिए। गोल्ड प्लेटिंग क्या होती है कि 10 रुपए का दिखाओगे आप काम किए, 20 रुपए में खत्म हुआ। इस चीज को वेरीफाई करना बहुत मुश्किल होता है, इट इज रिडन विद करप्शन एंड सो ऑन। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को अगर कैप्चर करना है तो वो उसका प्रॉक्सी बैंक्स ही होता है। बैंक का लोन होता है और वो इजिली गवर्नमेंट का गारंटी होती है, इजिली वापस मिल जाता है, उसमें फी इनकम भी अच्छी होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में जो, चूंकि आप जब कुकिंग शुरू ही कर देते हो, जब आपने दाल मखनी बना ही ली तो आप सोचोगे फिर पालक पनीर भी बना लो, फिर मैं बटर चिकन भी बना लो, बिकॉज यू डोंट हैव द इंटीग्रिटी टुवर्ड्स द बुक्स। तो इसलिए मैं इंफ्रा कंपनियों से दूर रहता हूं, और मैं भी आपको, आप चूंकि मेरे अभिन्न मित्र हो तो मैं आपको भी यही सलाह दूं। यस सर, मैं भी मतलब दूर ही रहता हूँ क्योंकि मुझे भी उन पर बस कॉन्फिडेंस। फिर तो क्या। राइट, ओके, ओके, थैंक यू सर। पूछिए सर, पूछिए हाँ सचिन जी जी। नमस्कार सर। सर एक्चुअली मेरे को ये पूछना है कि इंश्योरेंस सेक्टर और उसमें भी प्राइवेट या गवर्नमेंट, और आपकी परमिशन से मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ, इफ यू डोंट माइंड विद योर परमिशन।
अगर किसी को आप तो सबसे अच्छे दोस्त हो, बोलिए अरे ना। सर मेरी सौभाग्य सर, अगर किसी को टेक्निकल सेट है वो चार्टिंग का है तो नहीं नहीं, वो मत बोलिएगा, वो हमारे आपके बीच की चीज है, वो मत नहीं नहीं, मैं ये बोलिएगा। कहता हूँ कि वो कम से कम वो गुरलीन मैडम को कर ले तो कोई टेक्निकल की किताब पढ़नी ना पड़े, अगर गुरलीन मैडम को फॉलो कर लेते तो बस इतना ही सर। अरे वाह भाई, बहुत अच्छी बात है भाई, सभी लोग फॉलो कर लीजिए गुरलीन मैम को। सचिन जी बोल रहे हैं, इंडोर्स भी कर रहे हैं। जो भी 400 लोग सुन रहे हैं, प्लीज फॉलो कर और लीजिए। गुरलीन मैम शायद सुन भी नहीं रहे सर होंगे। उसके लिए गवर्नमेंट, क्योंकि नया ऑस्ट्रेलिया बनना है हाथ में तो। बहुत अच्छी बात बोली आपने। चलिए, सुन लिया, उन्होंने 100 भी कर दिया। चलिए, और कुछ पूछना है आपको? सर थैंक यू वेरी मच। बोलिए। अभी मेरे पास 30 सवाल पेंडिंग है लोगों के, जल्दी जल्दी पूछिए, 30-30 सेकंड में जिसको भी पूछना है। सर ये ऑयल एंड रिफाइनिंग सेक्टर के बारे में आपका क्या कहना है, लाइक एचपी, आईओ, पीपी? बताए तो, जो पीएसयू वाले हैं सब, अभी गवर्नमेंट इसमें कुछ कुछ करने वाली है। क्या करेगी वो तो बाद ही में न्यूज में आता है। अगर आपको प्राइस एक्शन अच्छा लगता है तो मीडियम टर्म में तो काफी बुलिश रह सकते एक्चुअली हैं। इनका वैल्यूएशन बहुत लो है एंड डिविडेंड यील्ड बहुत बेटर है, तो 9-10% अगर। मैं वो सब देखता ओके। नहीं हूँ, वो सब मैं मैक्रो ही देखता हूँ, उसके बेसिस पे ही डाइवर्सिफाइड बेट लेता हूँ। आधी या 2/3 बेट सही हो जाती हैं और उसके बेसिस पे पैसा कमा लेता हूँ। क्योंकि ये डिविडेंड और ये सब, इसमें इतने हुनर होते हैं, बड़े बड़े लोग तो कर नहीं पाते, तो हम लोग क्या ही कर पाएंगे। आप राज्य, और कुछ पूछना है आपको? एक्चुअली मैं बीपी पे थोड़ा सा इन्वेस्टेड था, तो इसीलिए मैंने पूछा। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये आज जो प्राइस दिख रहा है, साल भर बाद इससे ऊपर ही रहेगा, काफी ऊपर रहेगा। अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज आ जाती, जो गवर्नमेंट कोरोना से पहले इसका डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह करने का सोच रही थी, ओके। तो एंड फिर स्काई इज द लिमिट। अब जब आपने एकदम बताया तो ये जो फ्लाइट चार्जेस और कॉनकोर और ये सब हैं, तो इनके मेरे ख्याल से अच्छा रहना चाहिए इन फ्यूचर में। बिल्कुल बिल्कुल, 100%। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दैट। दिक्कत कहाँ होती है ना राज जी, लोग सोचते हैं कि मेरा स्टॉक सबसे आगे जाए, मैं वो क्लेम नहीं कर रहा हूँ। ये सारे स्टॉक्स भी आगे जाएंगे, हो सकता है बैंक इससे ज्यादा आगे जाए, सीमेंट इससे ज्यादा आगे जाए, स्टील इससे ज्यादा आगे एक्चुअली जाए। एक्चुअली हो सकता एक्चुअली है। सर, हाँ, मैं अब एक लाइन और बोल देता हूँ, जब आप बैंकिंग बोल रहे हैं दो बोलिए, आप दो बोलिए, 2 लाइन बोलिए कि अब, एक से काम नहीं बनेगा। बैंकिंग में क्या है कि वो इतना लोगों को पैसा देता है कि पता नहीं किस किस को दिया, वो कितना एनपीए होगा, वी कांट प्रिडिक्ट। तो जो इंडिविजुअल नहीं नहीं, बिजनेस ऐसा है। ऐसा है, बहुत ही टाइट रेगुलेशन है इंडिया में, वन ऑफ द बेस्ट है इंडिया में। आरबीआई इज वन ऑफ द बेस्ट सेंट्रल बैंक्स, और इसमें आप सोचो कि यस बैंक जैसा एपिसोड जो है वो बहुत ही रेयर है। तो आप जो एनपीएस पब्लिश हो रहे हैं, खासकर पीएसयू बैंक्स के और बड़े प्राइवेट बैंक से, आप रिलाई कर सकते हैं। ओके। ये आप, हाँ मतलब मेरा ये मानना है, आई हैव द राइट टू बी रॉन्ग। अब 33 लोग रिक्वेस्ट कर चुके हैं, तो जल्दी जल्दी भाई आइए, पूछिए जल्दी जल्दी, छोटा सर छोटा। आपने कल बहुत सारे ट्रेड्स लिए थे इंट्राडे में, तो आप उस पर कुछ शेयर कर सके तो आप वो बताइए। और आपको जो भी इंट्राडे में प्रॉफिट्स होता है, तो आप उसको आगे कैसे इन्वेस्ट करते हैं, मीडियम टर्म, स्विंग या लॉन्ग टर्म में बेसिकली? देखिए, कल जो ट्रेड लिए थे वो सच बताऊं तो मुझे आज याद भी नहीं है, ठीक है, तो भूल जाता हूं मैं। और दूसरा चीज की कैसे करता हूं, तो मैं 25% ऑफ द कैपिटल जो अपना है वो ट्रेडिंग में रखता हूं, और 75% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रखता हूं। ओके। तो जैसे ज्यादा अगर फायदा हो गया तो उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्ट कर देता हूँ, और अपने स्टॉक्स को मैं प्लेज नहीं करता हूँ। ओके सर, ठीक है। थैंक यू। हाँ, गुरलीन मैम पूछिए। सचिन जी चले गए लगता है। सचिन जी आने आपको इंडोर्स किया भाई, सब लोग फॉलो कर लीजिए गुरलीन मैम को। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड अब जब टेक्निकल्स की बात हो ही गई है, तो आई जस्ट एड अप माय टेक्निकल व्यू ऑन द इंडेक्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट इज निफ्टी. So if we look on the monthly chart, the top that was registered was back in April of 1992. After that, Nifty just fell into, not exactly fell, but it slowly started inching up in sort of a parallel channel. But the overall trend was, again, it was an uptrend, but it was like a slow inching uptrend. Next high was registered back in, I guess, December of 2007. And the same thing happened again. It just kept on going, inching upwards slowly and slowly, again in a channel. And now that it broke out last year, I'm just looking on the basis of the price structure. So and yeah, I'm just estimating, not at all predicting. So looking at what has already happened in the past, this surge, that the sudden surge that comes up,
it goes on. I mean, it went on in the past for like 2 to 2.5 years. So I am expecting the same if we see in the investing perspective, and I am bullish on the index. And if we just talk about the trading perspective, it's like trade what you see on the screen. I mean, do not try to, overthink or overestimate. Just go on with the trend, and there'll be small fluctuations, there'll be minor pullbacks, and there'll be these minor shakeouts. But ride along with the trend. And in investing, just hold on to your stocks, hold on to quality, and do not over allocate, and ride your winners. And for trading, just ride on with the trend. That's all. तो आपको क्या लगता है कि अभी जैसे अभी इट इज वेरी फ्यूटाइल, बट सबसे ज्यादा मजा तो इसी में आता है कि निफ्टी यहाँ से और कहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटी है और कितनी प्रोबेबिलिटी कल है, तो ऊपर है 17,000 से 20,000 25,000? Yeah. So, in my opinion, I think that we can see a level of 30,000 in Nifty. Just estimating it for, the 2.5 years, not forgetting the fact that we're already 1 year down the line. So, as you just, rightly said earlier, that it's 17K right now, 17,000 right now. It might slowly inch towards 18,000, and it wouldn't surprise anybody, right? So, the view remains the same. The level for it would be like 30,000, in my opinion, and I might be wrong. But I'll not like really overthink or overestimate about it. But I'd just go on with the trend, and I'd just hold on to quality and ride with it. Yeah. ओके, राइट सर जी, गौरव जी बोलिए। मुझे रिक्वेस्ट ऐड करने में टाइम लग गया। मुझे लगा आपको कुछ ऐसा तो नहीं बोल दिया लास्ट टाइम के गुस्सा हो गया भाई मेरा बोल के। ऐसा मतलब ये सब आप बोल के एकदम भावुक कर देंगे ना, नहीं, और जितने लोग पेशेंस के साथ सुन रहे हैं 1.5 घंटा से, उनका हाँ, टाइम वेस्ट हो जाएगा। नहीं नहीं ऐसे जल्दी बोला, बोलिए। हाँ, ऐसे ही बोला। भावुक कर दिया आपने, नहीं रुला दिया। नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं। एक्चुअली आप आर यू फॉलोइंग दिस FIDA डेटा? बिकॉज एक्चुअली मैं टेलीग्राम पे कल जी हाँ, अरे जो लोग सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट को या इस जो भी है ये, गौरव जी एक चैनल चलाते हैं जिसमें DIA FIA का डेटा बहुत ग्रैनुलर लेवल पे रोज पब्लिश करते हैं, सालों से 2008 से पब्लिश कर रहे हैं ना। ये नहीं 2018 से कर रहा हूँ शायद, लेकिन मार्केट में तो 2018 भी बहुत बड़ी तब बात तो है। मैं तो टेलीग्राम नहीं था ना। रोज वीडियो नहीं बना पाता हूँ, आप तो रोज पब्लिश कर रहे हो, और बहुत कम लोग इस चीज को जानते हैं, तो उनके चैनल पे जाइए, और मैं तो फॉलो करता हूँ। उसमें DIA FI डेटा बहुत ही ग्रैनुलर लेवल का होता है। बोलिए गौरव जी। एक्चुअली मैंने कल ज्यादा एनालिसिस नहीं किया क्योंकि उसका रीजन एक था, मैंने आज अच्छा पैसा बनाया, कॉल लिया था। लेकिन क्या होता है ऑफिस में मेरा जैसा ही ट्रेड अच्छा जाता है थोड़ा नेगेटिव वाइब्स आते हैं, तो इसीलिए मैंने जानबूझ के चलिए नहीं सवाल लिया। पे आ जाते हैं। 33 लोग पेंडिंग है हमारे ओके, पास तो सवाल मैं बोलता हूँ बोलिए। FIDA के डेटा का आप यू आर गेटिंग इंटरेस्टेड नो, सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्यू। 2 मिनट लगेगा अभी तो चलेगा। अरे 5 मिनट बताइए। 2 मिनट। मार्केट वाज इन रेंज लेट्स से 17,300 एंड 17,400। तो आप इफ यू लुक एट द लास्ट 4 डेज डेटा, वो नेगेटिव फिगर आता था या फिर इट वाज लाइक ब्रेक इवन FI और DIA का कैश एंड इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर। बट कल का अगर आप डेटा देखोगे तो इट वाज लाइक 1000 करोड़ प्लस। सो जब मार्केट एक रेंज में रहता है 200 पॉइंट 300 पॉइंट रेंज में रहता है, और जिस दिन उनका फिगर इन टोटल ऐसे 1000 करोड़ प्लस हो जाता है, तो हम ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कि नेक्स्ट डे वो जो छोटा सा रेंज है 200 या 300 पॉइंट या 100 पॉइंट का ब्रेकआउट हो सकता है। तो आज क्या हुआ, कल 900 करोड़ का बाई था, तो आज बहुत हाई प्रोबेबिलिटी था कि आज ब्रेकआउट होगा। ओके, पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट, इंट्राडे में आज अगर आप देखोगे निफ्टी का पुट और कॉल का डिफरेंस, एक टाइम पे वो 3 करोड़ का डिफरेंस हो गया था, जो कि लास्ट 3 या 4 महीने में इतना नहीं हुआ था जब निफ्टी 17,420 में था, है ना। तो कल का डेटा और आज का ऑप्शन डेटा देख के, ये मैं एक्चुअली जनरली ऑप्शन सेल करता हूँ, आज मैंने खरीदा अच्छा सा, है ना। तो जस्ट ये शेयर करना था सर, और कुछ नहीं। नहीं गौरव जी, थोड़ा लंबा बताइए। जो FIIs का ट्रेंड है, जो अभी मेरे ख्याल है जनवरी से लेके अभी तक जो आया है पैसा FIIs का, और फिर हमने अगस्त में काफी बिकवाली देखी है, वो सब पे कुछ बोलेंगे क्या? लंबे समय का बताइए, आज का पॉडकास्ट लंबे समय के लिए। लंबे के लिए भी देखता हूँ। जैसे मान लीजिए 1 महीने के लिए रेंज में है ना, और उसमें मान लीजिए 22 साल कुछ हो नहीं रहा है, तो ये जो कॉन्सेप्ट बताया ये लंबा में भी काम करता है, लेकिन मैं लंबा भूल जाता हूँ। लेकिन जब रेंज में रहता है, फॉर एग्जाम्पल अभी 17,300 से 400, इससे पहले
16,400 से 16,700 में था, है ना, ये 2-3 महीने के लिए। तब आप देखोगे ना फिगर, तो वो तो क्या होता था कि 4 फिगर, एफआई कैश, डीआई कैश, एफआई इंडेक्स फ्यूचर, एफआई स्टॉक फ्यूचर, ये चारों को अगर आप टोटल करोगे, है ना, बाकी लोग भी हैं, आई एम नॉट टेलिंग दैट दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, बट ये लोगों का फिगर जब ऐसे न्यूट्रल रहता है और मार्केट रेंज में रहता है तो बेचो, है ना, स्ट्रैंगल स्ट्रैडल जो भी बेचना है बेचो। लेकिन जिस दिन एक रेंज के पास जाता है, ये लोग, ऐसा क्या होता है ना, मैं देखा हूँ कि डेटा बहुत पॉजिटिव नहीं होगा ब्रेक करके उसी दिन, फॉर एग्जांपल 17,400 से कल 30-40 पॉइंट नीचे रहा और डेटा पॉजिटिव बना, है ना, और आज जाके ब्रेकआउट हुआ। ऐसा बहुत कम दिन होगा कि मान लीजिए हायर लेवल 17,400 है, सो 17,420 पे जाके ब्रेकआउट दे देगा और डेटा भी मस्त बनेगा, ऐसा जनरली नहीं होता। वो थोड़ा रेजिस्टेंस या सपोर्ट के 50 पॉइंट आगे रह जाएगा और आप एंड ऑफ द डे डेटा देखोगे, इन चारों का फिगर ऐड करोगे और लास्ट 3-4 दिन का डेटा देखने के बाद अगर लगता है टोटल इनका 1,000 करोड़ से ज्यादा हो गया और जो छोटा सा रेंज बना है ना, अगर मान लीजिए सेलिंग में भी ऐसा ही होगा, मान लीजिए। अरे गौरव जी, हम थोड़ा ऑफ ट्रैक जा रहे हैं, हम डे टू डे का ट्रेडिंग का बात ही नहीं कर रहे, लंबे समय की बात हो रही थी। मैं एक काम करता हूँ, जो आप ये टॉपिक मेरा बहुत ही दिले अजीज है, इस पे हम स्पेसेस करते हैं सिर्फ 2 दिन छोड़ के। आज वेडनेसडे हो रहा है ना, अपन फ्राइडे को आप करेंगे जो बोलोगे यार, FII हाँ आप जो बोलोगे, हाँ, ठीक है ना, पूरा सराखों पे। हाँ आप और हम। और थोड़ा निखिल वांट्स टू से और थोड़ा समथिंग। मेरा ये हाँ करवा दो यार, सॉरी, थोड़ा अच्छा करके, मेरा फॉलोअर 1,000 भी नहीं हुआ, मैं 11 साल से हूँ ट्विटर में। सबको फॉलोअर चाहिए और मुझे कोई फॉलो करता नहीं। सी असली फॉलोअर कौन होता है? जो आपको फॉलो करे, जो आपकी बात माने। मैं तो रूफटॉप से चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ आरटी करो, तो 12 लोग आरटी नहीं करते हैं, नहीं तो क्या फायदा है इसे 25,000 नहीं फॉलोअर नहीं, का? मैं जो, क्या विल गो टू निखिल। ओके थैंक यू। निखिल सो गए क्या? एनीवेज, देवेंद्र जी, जॉन। हेलो आनंद जी, मैं हाँ आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसे मेरी फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है और हमारे जैसे आदमियों के लिए क्या पोर्टफोलियो एडवाइजरी सर्विसेज लेना ठीक रहेगा? क्या वो हमारे रिटर्न्स में काफी ज्यादा बढ़ने में हेल्प कर सकते हैं क्या? थैंक यू। देखिए, पोर्टफोलियो एडवाइजरी सर्विस जो है ना, वो एकदम डॉक्टर की तरह है। ओके, तो अगर आप डॉक्टर की सर्विसेज लोगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। लेकिन डॉक्टर एक जो बनता है वो पहले तो MBBS की तैयारी करता है, उसके बाद वो शायद जूनियर रेजिडेंट बनता है, रूरल पोस्टिंग करता है, फिर वो MS करता है। बहुत से डॉक्टर तो पोस्ट MS भी पढ़ते हैं। 15 साल में जाके वो डॉक्टर बनता है। ओके, और अगर आप सोचोगे सबसे डिफिकल्ट जो एग्जाम है वो डॉक्टरी का ही है। मैं तो IAS के एग्जाम की भी तैयारी कर चुका हूं, तो आपको बता सकता हूँ विद लॉट ऑफ कन्विक्शन। सबसे डिफिकल्ट, क्योंकि आप दिन में 14 घंटे तो वार्ड में होते हो और फिर आप जाके पढ़ाई करते हो। पर्सनल लाइफ की तो आपकी हो जाती है बल्ले बल्ले। 15 साल बाद आप डॉक्टर बनते हो, तब आप पेशेंट को कॉन्फिडेंटली बोलते हो कि हाँ भैया पैरासीटामोल दिन में 3 बार खानी है, और फिर पेशेंट आपसे 3 बार पूछता है कितनी बार खानी है, 3 बार। इंडिया में फाइनेंशियल एडवाइजर बनने के लिए जो बार है वो इतना लो है, इतना लो है कि मतलब बच्चों का वॉलीबॉल भी उससे ऊपर है, कोई भी बन सकता है, राइट। और आप डॉक्टर नहीं पसंद आया तो 500-600 रुपए का लॉस है, 1,000 रुपए का लॉस है। फाइनेंशियल एडवाइजर अगर गलत पकड़ लिया तो हो सकता है लाइफ की पूरी सेविंग चली जाए, हो सकता है कि बहुत बड़ा इमोशनल लॉस हो जाए, हो सकता है फिर जिंदगी भर व्रत बना लो कि मैं FD में ही करूंगा, लाइफ फिलोसफी ही चेंज कर दे आपका फाइनेंशियल एडवाइजर। और मैं बहुत ही दावे के साथ कह सकता हूं कि 100 में से जो 95 है वो किसी काबिल नहीं है। तो आप समझो कि मतलब इट इज लाइक, कैसे बोलूं, बिजनेस के लिए एक अच्छा पार्टनर आपको मिल सकता है, लेकिन अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर मिलना बहुत मुश्किल है। मिल गया तो जिंदगी बदल सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ इंटरनेट के आने के बाद, 2001-2002 के बाद, खुद से अवेयर होना है स्टॉक मार्केट के बारे में, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, राइट। इवन अगर आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड भी लेके चलोगे, कोई घाटे का सौदा नहीं है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता, सिर्फ इंडेक्स म्यूचुअल फंड में डाल के छोड़ दो। इस पॉडकास्ट से अगर एक लर्निंग आपको बताऊं, मैं तो कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हूं नहीं हूं, किसी को राय देता नहीं हूं, फ्री में तो बिल्कुल ही नहीं देता हूं। मतलब आप लोगों को लगता होगा कि फ्री में दे रहा हूं, बट फ्री में नहीं दे रहा हूं, देयर इज एन एजेंडा बिहाइंड इट। तो यही है कि खुद पे रिलाई करिए, खुद से सीखिए, और नहीं सीखने का टाइम है तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करिए पूरा पूरा, 1 या 2 इंडेक्स फंड। ये नहीं कि 3 या 4 ले लिए, वो फिर चार्जेस बहुत हैवी हो जाएंगे। जब धीरे धीरे थोड़ा समझ में आने लगे तो ब्लू चिप से शुरू करिए। ऐसा ब्लू चिप जो 10 साल से जिसने कभी घाटा कमाया ही नहीं है, 10 साल से जिसका स्टॉक जो है, जो वो समझ में आ जाएगा, 5 ही 6 पैरामीटर होता है, ROC, ये सब मनी कंट्रोल पे दिया हुआ है। जो मार्केट लीडर है उसमें करिए, आधा म्यूचुअल फंड, आधा अपने खुद के स्टॉक।
दूसरों पर रिलाई करना मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि इंडिया में गोरख धंधा बहुत होता है और जो सर्टिफिकेशन का बार है, एक एडवाइजर बनने का जो बार है, वीजा विज डॉक्टर या चार्टर्ड अकाउंटेंट या ये सब बनने के बहुत ही नीचे है, बहुत ज्यादा नीचे है, कोई भी बन सकता है। तो मेरे हिसाब से मत एडवाइज, लेकिन अगर आपको मिल जाता है कोई अच्छा, अगर आप इतने किस्मत के धनी हो, जो तो मैं तो कभी रहा नहीं, तो फिर आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि थोड़ा सा अगर किसी को ट्रिक्स एंड वो पता है मार्केट का, तो सुपीरियर रिटर्न पाना इंडियन मार्केट में इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। ठीक है, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Hi. पूछिए ना। अच्छा निखिल बोलो Yes, ना भाई। yes. Hi, Anand. How are you? आई एम गुड यार, Sorry. आई एम गुड। I was listening to you, but I had deleted this app from my phone, and I didn't know how to unmute from the web app. It took me a long time. I had to reinstall the app itself. I'm glad yeah, you installed it for me. I'm touched. No. I cannot thank you enough from the bottom of my नहीं heart. नहीं yeah, so think मतलब if you ask me about a long term view on Nifty, generally क्या है कि when it comes to allocation of money into markets, I don't suggest people मतलब if someone asks me कि यार क्या करना चाहिए, should we add money into the markets right now or not, I usually or de-risk, let's say कि should we take out money right now, a lot of questions have been coming कि अभी क्या पैसा निकालना चाहिए, the market are so high. So generally, most of the times I tell people is that you should never take out money from the market till you don't really need it. अगर आपको लगता है कि अगर आपके पास लिक्विडिटी की जरूरत नहीं है, if you don't need that liquidity right away, I don't think you should ever take out money from the markets, because a lot of times what happens is market runs away from where you are. So anybody who took out their allocation around 13-14k, and the market has run away from that prices so fast that they have not been able to add again. A lot of time what happens is with like people, starters, or people who are involved into other businesses or other things but not in markets, is that once the price runs away from where they're exited, it becomes very hard for them to get into the market. क्या होता है वो मतलब it becomes a question of an ego. I have seen a lot of people who exited like when the market was falling, but they could not re-enter because the market went up so high so fast. Talking about the long-term view of Nifty, I do think right now कि market is highly driven by liquidity rather than fundamentals. ठीक है. When it comes to Nifty, large companies अच्छा कर रही हैं. The large caps are doing better because due to this high rise in commodity prices and other stuff, जो competition है, it has become very fierce. So अभी क्या है, जो बड़ी companies है, they have a lot of liquidity and lot of power to muscle through these phases. They are eating the market caps of like small companies or small players in their field. तो you see कि बहुत सारा market जो actual let's say consumer size है किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी सर्विस का, वो बहुत सारा मूव कर रहा है टुवर्ड्स दी कंपनीज दैट आर इनटू निफ्टी 50 और अदर सेक्टर्स, जो भी बड़ी कंपनीज और सेक्टर्स में, तो उसके कारण से भी काफी फर्क पड़ रहा है. तो द थिंग इज कि आई डोंट थिंक यू शुड टेक आउट मनी फ्रॉम द मार्केट. द क्वेश्चन शुड बी कि do you increase allocation right now or do you wait for prices to come down or go higher? That's a very tricky question. That again, I think it comes down to liquidity. So how much money do you have and how much opportunities do you have right now? So जैसे कि अगर आपको कोई अच्छी opportunity मिल रही है and you have higher allocation towards the markets right now, you probably could take a bet over there. It's not just one place where you can put money into. There are multiple places. You just need to see कि कहाँ पे opportunity अच्छी है, and then you allocate accordingly. Yeah, I agree with you. And see, ultimately, to make money in the markets, we have to make bets. And in order to make bets, we have to decide whether you want to invest now or you want to invest later. So my view is, I mean, I am 70% invested as of now. 30% I have kept. I always keep some cash because I don't want to leverage myself too much, because I'm 100% into equities only. There is no real estate, no gold. But if someone is listening to me and he wants to ask, so I'll say divide it into 5 parts, and within a year you invest everything, because after a year these prices will not be there.
That is my view. That is my bet. As I said, if you don't bet, you will not make money. You might lose also in a bet, but you have to decide. So make it into 5 parts, and a gap of 3 months each. You invest entire thing that you have, allocation for equities. And if someone is earning through job or through business, has some other cash flow, then keep doing SIP into few stocks or into index. So that's my view. You want to add? No. The only question that I am dwindling with is SIP. Though I understand, if you most of the people are working into something else, they are not full time into markets right now. Okay, तो अब आप SIP तो कर रहे हो. So what do people really have to decide? Question themselves is, do they increase their SIP or do they decrease their SIP? How do you decide when to increase or decrease an SIP? Like when do you No, I don't think. I don't think this is the time to decrease. One should go all in SIP. How do you decide that? How do you come to that conclusion? That's the view on the market. These prices are not going to be there 6 months from now. That's the view. I mean, that's the bet. Okay. I mean, yeah. So if you go half into the SIP, what will do? You will do with the half the money. You will increase allocation later on. So you're trying to time the market. Yes. I am also trying to time the market, but my view is that it's going to run away. There is no resistance now. Every sector is on the fire. Yeah. Okay, Ronak, you want to say something? I will come to last actually. That's fine. हेलो सर. Okay, no problem. हेलो सर. हाँ, बोलिए क्षितिज, बोलिए. सर मैं ये कहना चाहता हूँ सर, आज हम लोगों ने देखा कि आईटी इंडेक्स जो है ऑल टाइम हाई था, तो सर रीजन क्या था उसका? बियॉन्ड सेक्टर रोटेशन तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ. आईटी को क्या क्यों मिलेगा सर नहीं भैया, आइडिया नहीं. सर एक और क्वेश्चन सर एक और क्वेश्चन है सर. जैसे यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, तो मैं सर FIIs का रिलेटेड पूछना चाहूंगा कि सर जो आने वाले समय में FIIs किस सेक्टर में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर सकता है? आई थिंक ब्रोकरेजेस, फाइनेंशियल सर्विसेज. अरे सर इसका पता चल जाए तो मजा आ जाए. हाँ नहीं, लेकिन रौनक भाई क्या होता है ना कि हर एक का अपना व्यू होता है. हम जनरली पब्लिक में देने में डरते हैं. अरे सर नहीं, बोल रहा हूँ मैं अपना एलोकेशन बता रहा हूँ सर. बहुत मुझे लगा सर आपको मालूम होगा. नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं अपना व्यू बता रहा हूँ. बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज. जी सर. एंड ये आपका जो कंपनीज लाइक एशियन पेंट्स company, some of the commodity stocks as well. And FII is generally, lot of FIIs and pension funds, they are heavy into index, so they will invariably get into Reliance also, because Reliance is an index heavyweight. So but it is futile to track only FII, because FIIs are generally momentum players. Okay. Yes. हाँ रौनक भाई बोलिए. नहीं, that's fine. I will come to last. Don't worry. That's fine. अच्छा. क्षितिज और कोई क्वेश्चन है आपको? सर क्वेश्चन और भी है मेरे पास. जैसे कि मैं एक स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ. मैं सर कोई इंट्राडे नहीं करता हूँ. आज ट्रेडिंग से रिलेटेड बात ही नहीं हो रही सर. अभी करेंगे, फ्राइडे को फिर से करेंगे. तो सर लॉन्ग टर्म क्वेश्चन भी है मेरे पास. जैसे कि सर हम लोगों ने देखा कि फार्मा सेक्टर जो है सर, जैसे कि सन फार्मा है, ये सब सर बेस्ट कंपनीज है सर. जैसे रिलायंस हो गया, और भी मतलब कंपनीज हैं, फार्मा हो गया, और भी जो बेस्ट कंपनीज होती हैं, जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं, वो सर स्मॉल कैप और मिड कैप की तरह सर कंटिन्यूसली रिटर्न क्यों नहीं देते हैं सर? कंटिन्यूसली सर, जैसे कि हम लोग 2020 में देखा, 2021 में देखा कि सर सबसे ज्यादा मिड कैप स्मॉल कैप था. सुन लीजिए, म्यूट कर लीजिए. आप घर जाइएगा तो देखिएगा कि HDFC बैंक ने 1995 से लेके 2021 तक क्यूमुलेटिव CAGR रिटर्न कितना दिया है, वो देखिएगा. और जो स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है, या स्मॉल कैप का कोई म्यूचुअल फंड है, उसने कितना रिटर्न दिया. ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि लार्ज कैप रिटर्न नहीं देते हैं. लार्ज कैप में फ्लक्चुएशन नहीं होता है, तो डे टू डे में बड़ा बोरिंग लगता है कि कई सालों से ये जो है 1500 के भाव पे ही है, 1500-1600 के बीच में घूम रहा है. लेकिन जो आपके पोर्टफोलियो को, अरे अब सुन लीजिए ना प्लीज. यस सर. ना आप पूछना है तो पूरा पूछ लीजिए, फिर मैं पूरा बोलता हूँ. ठीक है सर, आप कंटिन्यू कीजिए सर. हाँ तो लॉन्ग टर्म में जब आप होल्ड करेंगे 5 साल 10 साल, अगर बड़े स्टॉक्स को होल्ड करेंगे, तो वो जनरली आपको किसी भी रैंडम स्मॉल कैप से बेटर रिटर्न देते हैं.
और उसमें वॉलेटिलिटी भी कम होती है। ये मेरा मानना है, मैं गलत हो सकता हूँ। Yes, sir. Okay. Thank you, sir. Hi, Anand sir. Ratnesh here. हाँ How are you? बोलिए ना, I'm good. हाँ, तो सर मेरा ये क्वेश्चन था कि सिंस रौनक सर भी है यहाँ पे, तो जब कोई हमारा स्टॉक एफएनओ में मूव होता है, सपोज जैसे आईआरसीटीसी का अगर हम केस लें एंड द वे बैन पीरियड बोल रहे हो? सॉरी नहीं बैन पीरियड, बैन बोल रहे हो? सपोज इट हैज मूव टू एफएनओ, सो जो ये जो प्राइस है, प्राइस पे उसका एक्शन उसके फंडामेंटल्स या उसकी न्यूज या उसके उसके फर्दर जो स्कोप है उसकी वजह से होता है या बिकॉज ऑफ एफएनओ? जनरली मैं ये जानना चाहता हूँ कि इट इज द एफएनओ ट्रेडिंग दैट इज डिराइविंग द प्राइस ऑफ द स्टॉक और इट इज द बेसिक थिंग, राइट, जो उसका बेस है बेसिकली स्टॉक का? Let me give you the answer. See, यस यस in क्या होता है, whenever any stocks comes into the FNO, right? So now it will be introduced to the options, right? So now there are so many big players like FIIs and DIs will start taking participants into those stocks. So ultimately, they will start doing some cash investment and doing covered kind of stock. So see, fundamentally things will remain same. There will not be any change that whether it comes to the DMart is not into the FNO right now, right? But still, it's a quality company. But see, whenever any company comes into the FNO, there are some dedicated funds, who are playing into the covered call kind of strategy and like that. Well, they don't have any options. They have to invest into the cash to do those kind of activity. So little bit appreciation we can always expect when any comes introduced into the FNO. So that's what my perspective can be wrong. Yeah. So yeah. ओके ठीक है, थैंक यू। ओके रनीश जी बोलिए, और कोई क्वेश्चन है? नो सर, बताइए, कब मिलना है आपसे? सर वो तो हम मिलते हैं पार्टी कब आपसे, दे रहे हैं? डीएम करते हैं उसके लिए। थैंक यू, सो नाइस टू यू। यही एंड बोलते सर रहते हैं डीएम। एक चीज और बोलूंगा कि जैसे बुल रन चल रहा है वैसे आपके फॉलोअर्स का भी बुल रन चल रहा है सर। कहाँ मतलब 9,000 अरे से कोई बुल रन नहीं चल रहा है, जितनी मैं सर्विस दे रहा हूँ ना बॉस, ये अब छोड़ो, क्या सर बोलूं, आई नो एंड मूड खराब हो जाएगा। Anand bhai is next star of the cover trading. अरे रौनक भाई, अच्छा मैं अभी रौनक भाई से मिला, लास्ट संडे हम लोग मिले, इतना मजा आया कि क्या बताऊं, मतलब सीरियसली अरे सो मच आनंद, वार्म। वो मेरा प्लेजर, आप जैसे बड़े इंसान को मिलने का ये मौका संडे में मिलते हैं, क्या बोलते हैं? मिलते हैं डेफिनेटली। ये नहीं, ये थोड़ा I'm out, will अच्छा, plan next week. श्योर। थैंक यू आनंद सर, थैंक यू रौनक हमारे सर। साथ ओके हमारे साथ डॉक्टर साहब भी हैं। डॉक्टर साहब कुछ बोलेंगे? Thank you, Anand, for the insights like on being so bullish on the economy. Like I had one question about like basically if the FII input kind of dries up in the long term or some like geopolitical tensions and other things escalate, do you think like even the domestic inflow will be able to sustain the markets like at least by the valuations? So I was just thinking about other factors which could influence. Again on pharma sector, like basically like even Reddy's in the earnings call this time, like they said that there is increased competition like from other players like in the API business and other things. So like there is a reason for like continued underperformance, like कि आगे बढ़ेगा या नहीं, like I don't know, like because you people are into the markets, you would know like more about how businesses and valuations work. But from a fundamental perspective, I don't think so. Like Indian pharma, or like specialized players, okay, like Divi's Lab and other things, people who have like a license to biologicals, that is different. But I was just thinking about how the dynamics of like for example, you said about funds flowing from China to India. Okay, that's like justified. But how long will this kind of like apparent overvaluation, right? Like you are forecasting the future, that's fine, but for how many years can you like value for next 3 years, 4 years? Today, is it how markets always work, like they value like 4 or 5 years in advance? Sir, I'll answer the last question first, and that is stock market will always discount future earnings and future happenings. So definitely, if any stock or the entire index is making all-time high when the bad news is coming and every bad news is being discounted, then all the big players in the market, they are seeing some value which we are not able to see. That is one. Okay. So yes, 3 years
into and in economy also, if you look at world GDP, it has made an uptick, highest growth in last 15 years. US had never seen 4%, 5% inflation since 2008, and US drives 60% of the entire world, consumption market. I mean, they do all kinds of consumption. So there, if you see very high inflation, that means there will be a lot of demand for all kinds of garden variety of products in the entire world. And India, for example, exporting 60% of the requirement of US medicines. This API and all is being serviced by India only. Yeah, they are So changing the like kind of norms after the COVID. They felt that we cannot. and this data is before COVID. This data is before COVID. अभी आने वाले time पे और भी बढ़ जाएगा. I mean, it will increase much more. If you talked about Dr. Reddy's or Aurobindo or Divi's lab, these are all 100%, not 100%, but like largely export driven. If you look at Aurobindo, I don't know the real numbers, but obscenely high number is for exports. I mean, all kinds of APIs they are doing. They are doing acquisitions in Europe. Yeah, Reddy like reported concerns about their API business, whether they will be able to grow or even sustaining was an issue, like from what they kind of said in their like report. So I'm coming to Dr. Reddy's as I'm holding it in my portfolio. See, since I was there in Hyderabad and working for an institution, and also I tracked this company out of interest very personally, both Dr. Reddy's and Divi's lab. See, they have a lot of exposure in Venezuela. Almost 10% of their exports is Venezuela, and they have almost 60 subsidiaries abroad, and they have large business in Russia. So their concern is very, very specific to the company. Okay, and if you look at historically, also Dr. Reddy's is very, very diligent about disclosures. If they're going to have a loss of 10 rupees, they will say 30 rupees ka loss hone wala, and then they'll surprise you later on. Unlike other promoters or other companies who try to hide it under the carpet for this quarter, Dr. Reddy's is a very, very sound management. Yeah, And trust wise, like even in among doctors, it enjoys like very good reputation. Yeah, you're right in the way their business practices could be very honest. Yeah. I mean, if I start telling you stories of Dr. Reddy's, I mean, you will be surprised, how they tackle issues at a very, very personal level. And for example, there was a strike with Dr. Reddy's, and this promoter. There's a very nice book also on that promoter. Very, very sweet book. I mean, everybody should read that about entrepreneurship in India. And then the leader of the union was called by Dr. Reddy's, and he assured full settlement to all workers, and to workers who were employed for a very, very long time. He assured employment to their sons also. So rather than high-handed approach of other companies, other manufacturing companies, I mean, they handle every issue at such a with such a finesse. I mean, it has to be looked closely to enjoy the beauty of it. And they do aggressive provisioning. Their treasury is one of the most professional in the entire country. They make huge. They do all the straddle, strangle, seagull, and everything that they do in dollar, rupee, and in euro, and they have a lot of foreign currency loans also, which they manage very beautifully. So it's a very professionally run company. In pharma, I don't see any other company which comes even close to it. I mean, I was tracking Divi's also and Aurobindo also, so I can tell you that in spite of bad numbers, I'm holding this company because, as I said, when the bad times comes, I know that this company will bounce back. It's not a junk company, so that is very important for me. You asked about geopolitical issues also. There, I have a slightly different view. See, the thing is, when the geopolitics was going haywire, when Trump was threatening China, he was threatening North Korea, and then North Korea was threatening back, and then the Taiwan issue and all, everything was the center stage. And COVID has made everyone very, very aware of the imminent danger of economy taking a nosedive. And in any country, when the economy takes a nosedive, politicians are the most threatened of the lots. So I mean, this North Korean beloved leader, you don't hear from him. I mean, suddenly he has gone silent, right? You don't hear much of tension creating talks by China. In fact, Biden called Xi Jinping directly, saying your guys are not cooperating at junior level. Okay, so I mean, I don't foresee things snowballing to that level. But if it happens, it is a stock market. If it happens, we'll have to relook at it. And if we are having ears to the ground, definitely we'll be ahead in the game, because these games do not develop out of thin air. In fact, I am following a couple of guys who are
following radar systems and all the sophisticated machinery which is there on the border on Ukraine and so on. So we'll be first one to know it for sure. So I mean, not first one, but the early adopters in that sense. If something like really big is going to happen, I don't think it is going to happen in next 18 months. I mean, for sure, because as I said, these things develop slowly, and every US withdrawing from Afghanistan itself, and Russia trying to get into Afghanistan in a big way, is US taking a backseat when it comes to geopolitical issues under Biden. It looks like to me. We'll see how it unfolds in coming months, but I don't see any threat to global markets for geopolitics right now. As of now, it was pretty heated 2 years back. Probably all the big guys, they try to create things which will suit their election agenda, or which will suit their put that they have bought, and so on. Nancy Pelosi, you would have seen how she has traded in last 1 year. What was the third question I missed? Yeah, I was just saying about the concerns regarding the same liquidity when FII and other inflow kind of dries up. Yeah, FII, if they withdraw, then definitely we can't sustain on Junjuns of the world and Damanis of the world. I mean, this market is driven by FIIs, and if they just try to put the exit button, then then what is I this I don't. daily balancing act when FII buy DIA sell? Is it to maintain the index because they have index positions? So is there a kind of artificial index manipulation, at least for futures and options going on? See, that is a very good question, sir. And my view is a little skewed, and people are going to laugh at it, but I'll still share it. If you look at the Adani episode after the Sucheta Dalal's tweet, there were three companies of Adani, which was like offshore entities, some random names, and so on. They were investing in Adani stocks, and later it was tagged to Adani promoters and so on. So my limit, for example, for Z also or India Bulls also, lot of FII money, the way it comes from Mauritius or from Singapore and so on, it is the Hawala money which goes on from here. Okay, a lot of that money. I mean, a lot of it is pension funds and hedge funds and so on. That is also there. But when we see this rebalancing, or FIIs buying and then DIS selling almost the same amount and so on, lot of these same guys are inputting from one laptop to the another laptop. That they're doing it like that. I mean, that is my fundamental belief. And in last 10 years, if you look at any of the scams which have happened, so a lot of this kind of rotation happens. That money goes from here, and then it goes comes by FII route, and then in the evening we see that data that FIIs have invested so and so. Otherwise, Puneet Goenka of Z, okay, he has just 5% stake. They are almost bankrupt. How is he able to hold the board when Invesco and everybody else who is holding 17% is not able to evict him? Because he is holding, via these shell companies registered in Mauritius. He's maintaining the dominance in the board by these shell companies. That is another example. Absolutely. So that is my limited answer. That this game that we see, that DIFI data matching a lot of times, or many times, that is because same guys are selling and buying. Okay, thank you so much. Always a pleasure At to least listen partly. to you, and thank you for the amazing insights. Right. Next question. Okay, so Anand, let me take something about my view for Nifty. Yeah. So yeah, see, currently we are at around 17, around 400, 300, whatever it is. 500. So yeah, 17.5. Yeah, so that's what we are, right? So see, a lot of people are sitting on a cash and thinking about the corrections. Like still, I heard a lot of people that we can expect around 7,800 Nifty. So forget about it. We will not see Nifty even 15,000. If we see it for hours, it's a great opportunity. So first thing is that thinking about the downside of the market and sitting on a cash and not participate into the market will not be the ideal option. Until and unless you are very good at trading and you will keep your money, you will park your money in trade and you will get an investment, then I think you should be sit on cash. Because what I feel is that the juice part of the investment, which was, I think it's an opportunity when market was around 11,000, 12,000.
at that time, if anybody was getting into the market, that would be the right time, because 7,500 nobody ever got, right? Even I had a lot of cash at that point of time. I didn't invest anything because everybody was feared. But the time when market was around 11, 12,000, it was the right time to be into the market. So the main part was, for me, it's 12,000 to 16,000. It's over, right? 4,000 point movement. Whoever gets it, they will be fortunate to be into this. For that. Now, what will be in future? See, I'm not seeing correction. That doesn't mean market will suit up like anything now, because valuations will also be the matter of the concern, right? I'm not seeing that we are very, very expensive in terms of fundamentals, but now it's a decent, right? Now it's a decent valuations. Like we cannot see like appreciate like double and triple kind of. I'm following you Yes, from long date. Okay, yes. I learned something from you. So my current question is that actually investing Let in him mutual complete, funds, please. so most of the people please, are please, saying please. that by December there will be 10 to 8 to 10% Please, correction please, in please, Nifty. please let me So finish. should I Bro, stop my let me SIP Let finish. Ronak finish. or Let Ronak finish. continue my SIP Please, in please. equity market Uh, mutual fund? Sorry, bro. Actually, sorry, but let me finish first. I think, yeah, I had. So that valuations is also the kind of. I'm not saying it's a kind of concern. We can see a compounding return like 12 to 15% over a next couple of period time. But what I can say that if you are really very good at trading, right? I can say that then at least you can book some partial profit if you are sitting on a huge gun, and you can put that money in trading. But if you don't have any other options apart from investment, then rather than investing into the FT, it's better to be into the equity. What I can say, because I'm not saying that market from 17,000 to 25,000 in next 6 8 12, right? Like that, right? We may see some appreciation, and I am also expecting 10% correction. People are saying that 10% correction, that means from 17,000 to Nifty will go to 15,300 or 15,500. But that 10% correction can come at 20,000 as well. So we may see that market sold up to 20,000 and then come back to 18,000. Market can go to 22,000 and then come back to 20,000. So that 10%, 15% correction can come anytime. But it doesn't mean it comes now, right? So just to be into the expectations that market will correct and not participants and into the market will not be the idea, because this market is driven by the strong liquidity from the outside of the India. And second thing, a lot of people are saying a fundamental asset. It's not fundamental. Actually, inflation is also appreciated, right? So if you think that things are becoming costlier, even if you will start buying vegetables or something, well, if you will compare those prices, right? Even discretionary item or consumer durables, whatever it is, if you are comparing with last 2 years, you will see a lot of appreciation into that. So that should reflect into the market, right? So your purchasing powers will remain as it is, even if market will increase. So the important thing is that if you wanted to beat this inflation, can anybody please mute? Uh, yeah. So if you wanted to beat that in inflation, you will not have any, like, you should not be on FD. Definitely FD will not help you to beat that kind of inflation, right? Even me and Anand met before 10 days ago. So even we expect the real estate is about to bottom out right now, right? So if you don't have money like that, you don't have money of 1 crore to invest into any to buy any house or something, like, you can invest into real estate stocks. I am not saying that Godrej Properties will be doing very fantastic if you wanted to give me the name. I am expecting very good. Right, so there are a lot of such kind of companies which will really, I'm expecting to do well. So better to find quality stocks and see. This is a bull market. So वो बोलते हैं ना, bull market में everything will work, right? So ultimately, when this market struggles, like, then probably the quality stocks will remain here and there, and then ultimately the stocks which is appreciated just because of this bull run, that will only correct. So better to be into the leader of the sector,
right? Like Asian Paints, which which is an ongoing stock, Pidilite, like even if you wanted to know Reliance, you can say that even and the sectors which I am expecting to do well is the financial sector, right? Because uh, HDFC Bank and ICICI will drive the market now because this will be there. So and that will be there in future as well because they have a strongest organization culture and it's difficult to be to see the competitors against those kind of companies, right? So things will like that don't sit on the case and think about that market will come to 10,000 and again market will come to 7,000 and then we will take until and unless certain any geopolitical concern arise, which was definitely अभी अमेरिका ने कहीं पे परमाणु बम डाल दिया, that is a different matter. Anybody can wrong in that scenario, right? But other than any big things happens, we may not see any correction. Yeah, but the run which we seen like 10,000 to 17,000, we may not see like 70 to 30,000. May take another 4 or 5 years, right? But yeah, at the same time, don't expect any big corrections which is there into the market. If you will get anytime 10-15 corrections, 10-15% corrections, better to go and invest. That's what I can suggest. Try to make it out least. Make a portfolio of 20 stocks. It's like concentrated portfolio, and then do a side B in that kind of things. That will work accordingly. So that's what my perspective of this market. I may be wrong, guys. Huh? That's what I can say. Thank you. Thank you, Ronak bhai. Any other question we have? I see a lot of requests, but people are not asking questions. Yeah, so I am audible. Yeah. पूछिए. कैसा नाम है यार ये? हाँ बोलिए. नहीं उनको बोलने दीजिए. नहीं अब अभी बोल भी नहीं पा रहा हूँ मैं. आईडी भैया को बोलने दीजिए. हाँ जी. तो मेरा क्वेश्चन ये था जैसे हम तो एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं ना, हम तो रोज मार्केट खोल के देख लेंगे कि चलो इसमें इन्वेस्ट करना है, इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है. जो जैसे कोई पैसे इन्वेस्टर होता है, जैसे कोई जो रेगुलरली मार्केट को नहीं ट्रैक करता, वो उसको क्या देखना चाहिए कि जैसे कोई निफ्टी ETF फंड ज़्यादा अच्छा है कि कोई जैसे वेल मैनेज्ड एक्टिव फंड्स होते हैं, जैसे आपने HDFC का टॉप 100 बताया, ऐसे मेरे का वो है एमर्जिंग ब्लू चिप, ऐसे काफ़ी अच्छे वेल मैनेज्ड फंड्स भी है जिन्होंने अल्फा जनरेट किया है. मगर तो जैसे किसी पैसे इन्वेस्टर को कोई ETF फंड देखना चाहिए या फिर ऐसे कोई वेल मैनेज फंड देखने चाहिए? अगर आप मुझसे पूछेंगे, अगर आप नए हैं तो मैं आपको इंडेक्स फंड ही बोलूंगा. अल्फा के चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो बीटा भी चला जाएगा. No, I'm not asking for like for us people. We are active investor. We can manage a portfolio of stocks of say some set manage 15 stocks, 25 stocks. We can manually manage our portfolio. Like if say some relative asks us, I have some money. What shall I do with it, etc. मैं तो इंडेक्स फंड ही बोलता हूँ. इंडेक्स फंड या तो ETF. Okay, thank you. That's all I have to ask. Hi. Hello. May I ask a question? Yeah. Okay. Hello, everyone. Yeah, Sonesh here. So I'm a doctor like Dr. Srinivas, based out of Malaysia. I have a question here for the panel, for Ronak and others. So my question here is, I was listening to some of the key investors from US like Howard Marks and others. And the market right now is not in bubble territory, but definitely near overbought territory. So what is your view on shifting part of your investment into debt funds for now, for the next, I think 6 months, 1 year or so? डॉक्टर साहब आप किस चीज के डॉक्टर हैं? मैं यार मेडिसिन का. अच्छा MD हैं. चलिए अच्छा, तो मैं आपको फॉलो कर लेता हूँ. बहुत कई बार पूछना पड़ता है मुझे. कुछ तो मैं भी लेके जाऊंगा इस कॉन्फ्रेंस से. डेफिनेटली. तो ठीक है. देखिए कैसा होता है ना कि हिंदी में बोलता हूँ या इंग्लिश में बोलता हूँ. अरे नहीं, मलेशिया में तो मैं रहता हूँ तो ऐसे ही आप हिंदी में बोलो बिंदास. हाँ, तो कैसा होता है ना कि जो डेट फंड है उसमें 3-4 तरीके के रिस्क होते हैं. ठीक है ना. एक रिस्क तो आपका हो गया कि काउंटर पार्टी रिस्क हो गया कि आप डेट किसको दे रहे हैं. तो अगर आपने म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट किया है तो वो लोग कमर्शियल पेपर को या बॉन्ड्स को खरीदते हैं. वो आपको मनी कंट्रोल पे दैट यू कैन गो एंड चेक ऑन द मनी कंट्रोल वेबसाइट वेयर दे आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग.
So as it happened in Franklin or in many other schemes, it keeps happening that whoever they have given the actual debt or the commercial paper or the bond that they have bought, that money doesn't come back, and then your principal gets eroded. That is called counterparty risk. Second risk is second very big risk is interest rate risk. Okay, so what happens is that they have all bought bonds, okay, coupon bearing bonds. So when the interest rate starts going up, the price of that bond will go down. There's a very simple formula, it is given on the Wikipedia also, and very simple to understand. So when the interest rate starts going up, the price of the bond will go down. So one big misconception people have is that debt fund is equal to FD. It is not. Okay, it is a similar instrument which has lower volatility, but when the interest rate will go up, your principal can also be eroded. It has happened in the past. Okay. The opposite of it we have seen, all these long tenor funds, the gilt funds, the value went up drastically when RBI started cutting rates. So when interest rates were coming down, so the price of the long tenor government bond, which is also gilt, goes up. So if you go in money control and see from year 2017 to 2020, all the gilt funds, long tenor gilt funds, gave you returns of 15%, 17%, even better than equity, even better than small cap. So all I'm trying to tell you is that its return can be 15%, 17%, 20%, or it can be negative return also. So now from here, now it comes to the view. My view is as good as your view, but I'll tell you my view because I never shy away from giving my view. My view is that interest rate has seen the bottom. From here, if we go lower than this, it will create much more havoc in terms of inflation. Right. Like Kotak is giving housing loan at 6.5%. It was unheard of 2 years back. So we have seen like interbank rates. Bajaj Finance is taking money market rates at 3%, 4%. HDFC Limited is raising paper at HDFC Bank has raised at 3.7%. So these are rock bottom rates in a consumer driven economy, growing economy like India. We are not like Europe. So interest rate has bottomed out. So now when interest rate will go up, all the debt funds will give negative return. So be prepared for that. So I don't recommend that. You either be in equity or be in liquid funds or be in cash. You get zero in cash. You get no return in cash. But the zero is better than negative. Second thing, you are in Malaysia, so you can have. I think dollar will remain king, and Malaysian economy is being a smaller economy. And I don't know for how long you have been in Malaysia. If you have seen the Seven Sisters of the world and East Asian Miracle, followed by 1997 crash, so you would know that Malaysia is going to do probably much better than India. So you can be diversified in Malaysia also. That there you'll have non-rupee exposure, and also you will be 30% you can have in Malaysia, 70% you can have in Indian equities. So both will have equity risk, but different kind of equity risk. ओके थैंक्स आनंद ओके ये बात समझ आ गई कि अभी हमें डेट में फायदा नहीं है क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स तो डेफिनेटली बढ़ेंगे यूएस में भी वो टेपरिंग करना शुरू करेंगे बहुत जल्दी और इंडिया में भी ऑब्वियसली फॉलो करेगा नहीं अभी टेपरिंग अभी नहीं हो रहा है दे स्टेटेड पॉलिसी इटसेल्फ इज 2023 so we are talking about next 2 years there is not going to be any tapering but in India inflation we have election in 2024 if you remember Sheila Dikshit used to wear that pyaj ka mala and wo you remember Delhi elections inflation is a big election issue in India so we won't wait till US blinks if we have food inflation if we have milk powder becomes expensive dal becomes expensive we will raise rates and politicians are pretty smart to do that. I mean, they will not care about where the stock market goes. They will bring down the inflation just before the election. So I think, it's not going to go lower than this. For sure. It might go higher, pretty good chance. Okay. Because we have an election coming. Can I also ask a follow-up question? जैसे मलेशिया में you're saying I don't know about Malaysian market as well बहुत छोटी कंट्री है और कुछ ज्यादा नहीं है इंडिया में मेरा मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट है और एक परसेंटेज मेरा माफांग में है जो मिराई का फंड है जो फैंग प्लस स्टॉक्स में करता है तो उसमें मैं काफी देर से बढ़ा ही रहा हूँ तो डू यू थिंक इंक्रीजिंग इन दैट वुड बी अ गुड चॉइस राइट नाउ मेराई का अच्छा है हाँ इंक्रीज 30% से ज्यादा मत करिएगा योर इंटरेस्ट लाइज इन इंडिया योर हार्ट लाइज इन इंडिया राइट फाइनेंशियल हार्ट
Like you want to invest or consume later on 20 years down the line in India only, right? Not in Malaysia, right? हाँ हाँ, और अगले साल तो वापस मैंने इंडिया में आना है, तो So definitely hard makes हाँ, sense. so you invest in 70 to 80% you invest in Indian markets. It's going to do pretty good. Fangs, I mean Mirai Fangs is very good, but I would recommend India. बहुत अच्छा राकेश झुनझुनवाला जी ने बोला है कि अगर घर का खाना इतना अच्छा है तो बाहर क्यों खाना? हाँ यार, वो तो सब लोग बोलते हैं, और ऑब्वियसली इंडिया की डेवलपमेंट काफी अच्छी है, बट जस्ट फॉर डिवर्सिफिकेशन पर्पस अभी मेरा फार्म में ऑलमोस्ट लाइक 5-7% ही है, मैं उसको ऑलमोस्ट 20 तक सोच रहा हूँ बढ़ाने का। 20 से 30 कर सकते, that's what I said. हाँ, 20 से 30 तक जा सकते हैं, बट वो भी हीटेड अप है बहुत ज्यादा, तो आई डोंट ट्रैक इट, सो आई वोंट कमेंट ऑन इट, अभी बट कर सकते हैं 20 से 30% डाइवर्सिफाइड आप रह सकते अभी हैं। फार्म प्लस में क्या था कि उसमें 2 स्टॉक्स वो चाइना वाले हैं, एक बाइडू और एक अलीबाबा, जो कि पिछले 3-4 महीनों में काफी गिरे हैं, तो उस करके आई थिंक अपनी गिरना इंपॉर्टेंट नहीं है सर, इंपॉर्टेंट क्या है कि क्यों गिर रहा है, तो मतलब चाइना का किसी को क्रैकडाउन मजा नहीं करके आया तो उसने बोला गिरा दो। हाँ, तो क्रैकडाउन क्या होता है, मैं वी आर टॉकिंग अबाउट फ्री फाइनेंशियल मार्केट्स, राइट? आई वोंट पुट माय मनी एट अ प्लेस विच इज नॉट फ्री, नहीं तो अफ्रीका में लगा देंगे ना, वहां तो 21 दिन में डबल होता है। एग्री, बट उनका क्रैकडाउन इफ यू गो डीपर मोस्टली 10 सेंट के लिए था, बट सभी स्टॉक्स गिर गए हैं। It's random. It can't be predicted. It's random. Tomorrow it might be in your हाँ stocks. ये तो है, That's what I'm ये तो saying. I चाइना will का not put रिस्क in. है, एग्री। थैंक्स। India doesn't have that kind of risk. At least as of now, इंडिया we have not डजंट, seen like हाँ that, अभी right? तक तो कोई ऐसा इशू नहीं है, मोदी की बात पता नहीं, बट यार अभी तक तो सेफ है। हाँ आनंद भाई, मैं No, I mean our financial markets are pretty robust. I'm not a fan of the government, but I have no complaints about the way things are being managed in India. Much better than US बहुत and सुंदर Europe, व्यूज if है, you ask me. एग्री। हाँ आनंद भाई, मीडियम टर्म के लिए मैं 3 ट्रिक बताऊंगा, व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस इन लास्ट फ्यू इयर्स। उससे पहले डॉक्टर श्रीनिवास आस्क्ड अबाउट वन क्वेश्चन कि अगर एफआई चलेगी तो क्या होगा। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ये बताता हूँ। जब मार्केट गिर रहा था 12,000 से 10,000 गया लास्ट टाइम, तो डीआईज ने पहले बेच दिया, है ना, तब, और उसके बाद एफआई ने चालू किया बेचना 9,000 के नीचे। जब मार्केट ऊपर आ रहा था 9,000 से 12,000 पूरा डीआईज ने बाय किया, और उसके बाद एफआईज ने 12,000 के ऊपर बाय किया, यानी हाई लेवल। मैं आपको डेटा पूरा दिखा सकता हूँ। तो ये जो एफआई चले जाएंगे रहेंगे, ये राकेश झुनझुनवाला एक अच्छा चीज बोलते हैं कि इफ द गर्ल इज प्रिटी स्वीटर विल फॉलो, मतलब तो वैसा ही अगर स्टॉक्स अच्छे रहेंगे तो क्या मतलब, क्या 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 राकेश झुनझुनवाला ने बोला हाँ क्या? हाँ, कि इफ द गर्ल इज प्रिटी स्वीट। अच्छा, सूटर, मुझे लगा हाँ भाई, स्वेटर। हाँ अरे इंग्लिश थोड़ा नहीं अच्छा नहीं है मेरा, इसीलिए विल नहीं, फॉलो। सही बोल रहा है इसने, राकेश ने बोला है ऐसा। हाँ हाँ, नहीं बोलता है वो, ये सब तो बोलता ये है, मुझे क्या है पता ना, है, ये बोलता है। एफआईज लोग, मतलब मेरा जितना एक्सपीरियंस है, देसी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये बाय सेल तो करते हैं, लेकिन मनी फ्लो इज ग्लोबल। ऐसा नहीं कि यूएस मार्केट ऊपर जा रहा है तो इंडियन मार्केट नीचे जाएगा, तो सम पार्ट ऑफ द मनी विल बी फ्लोइंग। उसमें क्या है कि इंडिया में थोड़ा ज्यादा हो सकता है, स्टॉक में ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। ज्यादा ही होगा सर, और कहाँ ग्रोथ है बताइए? ब्राजील में, टर्की में, हाँ सब जगह हाँ, तो भूकंप आया हुआ पूरा है। पूरा तो वो नहीं, और इंडिया वैसे ही भी ये आएगा। अपॉर्चुनिस्टिक हाँ लोग हैं, वैसे भी बेचेंगे ऊपर नीचे खरीदेंगे। तो ये एफआईडीएस डेटा को ऐसा इतना नहीं सोचना। ये मैं सोचता था 10 साल पहले कि भाई ये चले गए तो क्या होगा, दुनिया ऐसा नहीं, हो जाएंगे तो फिर से आएंगे, है ना। देखो, जिंदगी में सबको इम्प्रूवमेंट लाना है, सबको अपना एक गाड़ी है तो 2 गाड़ी खरीदना है ना, मतलब एक जहाज है तो 5 जहाज चाहिए, तो पैसा तो हमेशा जाएगा ही जाएगा। तो हाँ, मैं देखा हूँ 2007 से मार्केट नीचे जाता है तो ऊपर आएगा। ये अलग बात है कि आपका स्टॉक ऊपर आया कि नहीं पता नहीं, है ना, लेकिन मार्केट जब नीचे जाएगा तो पक्का ऊपर आएगा। ये मैं लिख के लिख सकता हूँ, तो ये हमेशा ही होता है। तो मैं अभी 3 ट्रिक बताऊंगा जो मैं देखा हूँ, कभी कभी फॉलो किया हूँ, कभी कभी नहीं किया हूँ, जो पैसा बना के अच्छा दे सकता है मीडियम टर्म में। एक होता है एमएससीआई रीबैलेंसिंग, है ना। अभी लोग क्या करते हैं, उसमें आज लिया तो कल पैसा आना चाहिए। आप रीबैलेंसिंग के बाद 3 महीने का डेटा देखो कि जब भी एमएससीआई में रीबैलेंसिंग होता है, जो नए आते हैं उनको देखो कि एंट्री के बाद 3 महीने के बाद उसका प्राइस किधर है ना। ये करोगे तो आपको इतना कॉन्फिडेंस मिलेगा एमएससीआई रीबैलेंसिंग के टाइम में कि आप यू विल योरसेल्फ यू विल गेट द आंसर। तो पॉइंट नंबर 1 एमएससीआई रीबैलेंसिंग का देखिए। और दूसरा एक ये होता है कि जब भी ये अभी थोड़ा टाइम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, एफएनडो में कोई स्टॉक आता है, आप देखिए 15 दिन से 3 महीने के, अभी आप आज या कल कितना होगा उसमें लोग भूल जाते हैं, लेकिन आप 90 डेज देखो एमएससीआई रीबैलेंसिंग, और अपना कभी भी नया एंट्रेंस आता है एफएनओ में। थर्ड होता है कि आप ऐसे ही नॉर्मल टीवी चैनल देखते रहो, इधर उधर देखोगे ना, कुछ ना कुछ चलता रहता है मार्केट में, है ना। कभी टेलीकॉम चल गए, कभी पावर चल रहा है, कभी बैंक चल रहा है, तो आपको एक कभी स्पेशलिटी केमिकल चल रहा है। तो आप अगर मान लो 100 रुपीज का आपका
जितना भी इन्वेस्टमेंट है 20% अगर आप थोड़ा मार्केट अवेयरनेस रखोगे, है ना, कि कौन सा सेक्टर में नया पैसा अभी आना चालू हुआ है, जैसे आप वीकली चार्ट देखो या लास्ट 5 दिन में देखो कि कौन सा नया सेक्टर ऑटोमेटिक, अभी जैसे मैं पावर आप देखोगे ना, पावर थोड़ा ऊपर आ रहा है, जैसे एनटीपीसी और पावर ग्रिड हो गए, या फिर ऑटो अभी थोड़ा गिरा हुआ था, थोड़ा ऊपर आ रहा है। तो आप थोड़ा सा अगर पैसा रीबैलेंस करोगे, क्योंकि मार्केट में क्या होता है कि सब लोगों के पास भी पैसा लिमिटेड ही है ना, तो वो लोग भी लिमिटेड कैपिटल से कैसे करेंगे कि मान लो कोई नया सेक्टर अट्रैक्टिव आया, तो उसमें एक सेक्टर ऑलरेडी ओवरबॉट है, तो उसे निकाल के इधर डाल दिए। तो हम इंडिविजुअल लेवल पे भी भाई अपने पास मान लीजिए 10 लाख है या 1 करोड़ है, जो भी है, 10,000 है, 5,000 है, जो भी है, अभी क्या है, मान लो आईटी लिया था, भाग गया है, और थोड़ा वहां पे RSI 80 हो जाता है, थोड़ा डाइवर्जेंस, सेल डाइवर्जेंस आता है, तो क्या है, उधर से निकाल के जो RSI 30-40 है या नया सेक्टर जो आ रहा है उधर डालेंगे। तो ये 3 पॉइंट में थोड़ा, मतलब आप देखो 90 डेज अच्छा काम करता है बस। इसके ऊपर एक स्पेसिस करेंगे, अभी फ्राइडे को ही करेंगे, अरे आपको आपने को होस्ट बनाएंगे, आपने फ्राइडे को बोल पक्का दिया, मैं करेंगे, बहुत पक्का खुश। पक्का। एक्चुअली मैं ना वो क्या बोलते हैं, भिखारी की तरह आपको बोलता था कभी कभी कि थोड़ा फॉलोअर्स के लिए सर नहीं 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 देखिए नहीं, नहीं अभी अभी कैसा है कि मेरे को नहीं नहीं 35 रिक्वेस्ट आई है, तो सबका नहीं पूछ नहीं, लेते, नहीं तो लोग एक इतनी एक रात को सेकंड वेट एक कर रहे हैं, सेकंड बुरा एक सेकंड लगेगा। एक सेकंड एक चीज हाँ खाली बोलिए बोलूंगा बोलिए। भाई। 11 साल से मार्केट में होने के बाद 1000 फॉलोअर नहीं थे, लोग इज्जत नहीं देते थे, है ना, तो अरे वो मैं आपको अलग से सिखाऊंगा, उसके लिए अलग तो पॉडकास्ट है, इसीलिए, आपको लेकिन पर्सनली सुनिए ना सिखाऊंगा। एक सेकंड, आप लॉगिन पासवर्ड आप दे दो, आपका मैं कर देता हूँ 25,000। थैंक्स टू यू अभी और 3-4 हजार हो जाएगा, है ना, तो आप बेंगलोर कभी भी आना है, आओ, पार्टी वार्टी करेंगे। और थैंक यू, अभी आज के बाद फॉलोअर्स के बारे में एक बात भी नहीं करूंगा, अभी अपन को इज्जत मिलेगा भाई। कॉन्ग्रेचुलेशन हो गया गौरव भाई 1000। थैंक यू रौनक भाई, मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ, है ना, आपका स्ट्रगल तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, थैंक यू। ओके अरुण, हेलो अरुण पूछिए, शॉर्ट में जी पूछिएगा सर, अरुण। सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्या इन्वेस्टमेंट के लिए एफएनओ स्टॉक को रखना जरूरी है कि सर हम कैश स्टॉक में कैश के सर स्टॉक को सर हम इन्वेस्टमेंट के लिए रख सकते हैं, एफएनओ को रख? नहीं, इन्वेस्टमेंट में आप स्मॉल कैप में भी और मिड कैप में और लार्ज कैप में भी कर सकते हैं, ऐसा एफएनओ रखना जरूरी नहीं है। स्मॉल कैप में थोड़ा सा क्या ऐसा होता है कि बुक्स जो है उतनी क्लीन नहीं होती हैं, छोटी छोटी कंपनियों में चीज़ों को छुपाना ज़्यादा आसान होता है। वैसे तो बड़ी कंपनी में भी लोग छुपा ले जाते हैं, लेकिन मैं नहीं करता हूँ पर्सनली, क्योंकि स्मॉल कंपनियों में ज़्यादा स्क्रूटनी की ज़रूरत होती है, डेटा आपको ज़्यादा देखना पड़ता है, और जो बड़ी आंधी आती है तो उसमें छोटे पेड़ पहले गिर जाते हैं, बड़े पेड़ नहीं गिरते हैं, तो उसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। जी मैं तो नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एफएनओ में करो, आप स्मॉल कंपनियों में भी कर सकते हो, बहुत सी स्मॉल कंपनियां बहुत अच्छा कर रही हैं, जी जी अगर आपने छांटी हुई है जी तो सर, आप उसमें करिए। क्योंकि सर एफएनओ स्टॉक सर जिस स्पीड से मतलब एक नॉर्मल सर बात करेंगे अगर चलते हैं उनसे, अगर सर अगर कैश की अगर कोई अच्छा सा अगर शेयर आपको मिल जाए तो सर मेरे हिसाब से कैश करना ज्यादा सही है सर। अगर मिल जाए ना, अगर मिल जाए तो ऐसी चीज है कि मान लीजिए कि आपको अगर, तो बहुत कुछ मिल सकता है आज ही की तारीख में, एक रेलवे स्टेशन पे आपको बड़ा सा बैग मिल जाए पैसों का, अगर तो बहुत बड़ी। स्मॉल कैप में 10 में से 9 कंपनियां फ्रॉड होती हैं, तो अगर मिलना बहुत मुश्किल होता है स्मॉल कैप में। ओके सर। छोटे बैंक्स का ही देख लीजिए, छोटी एनबीएफसी का देख हाँ लीजिए, जी। लेकिन फिर भी लोग करते हैं और पैसा कमाते हैं, मैं नहीं बोल रहा, मार्केट में पैसा कमाने के 1000 तरीके होते हैं, मैं कभी नहीं बोलूंगा मेरा तरीका सबसे सही है, वो बोलना तो बहुत ही डम बात होगी। मैं नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत लोग करते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं जी स्मॉल सर, कैप में। सर आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन सर पूछ सकता हूँ अपने लिए, मीन्स एक नॉर्मल क्वेश्चन सर, पर्सनल क्वेश्चन है सर वो। मतलब इतना नहीं पर्सनल भी मत नॉर्मल जाइएगा, सर बिल्कुल सर पर्सनल सर मत हो सर सर जाइएगा। सर सर नॉर्मल है सर। एक छोटी सी बात है सर, मैं स्टार्टिंग से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मार्च में भी मैंने बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया था जिसका रिटर्न बहुत अच्छा है सर। अब सर मेरे को एक घर लेना है, तो सर क्या मेरे को घर लेने के लिए अपना इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करना चाहिए या लोन लेके मैं जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है मैं उसकी ईएमआई दे के? लोन लोन 80% 70% लोन लीजिएगा, ऐसा लोन लीजिएगा जो आपकी सैलरी से 50% से ज्यादा ना हो उसका ईएमआई। लोन लीजिए, उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी में आप लेवरेज क्रिएट करेंगे। मैं बहुत बुलिश हूँ प्रॉपर्टी में भी, इन्फ्लेशन की वजह से सीमेंट का, स्टील का, हर चीज का दाम बढ़ रहा है, तो आप बिल्कुल प्रॉपर्टी खरीदिए, ये सही समय है, प्रॉपर्टी के दाम भी अभी कम है। और लेकिन अपना स्टॉक का पोर्टफोलियो खत्म मत करिए, पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है, अभी आप, आपकी फोटो देख के लग रहा है आप काफी यंग हैं, तो ऐसे टाइम पे जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी है, और बिना पैसे की जानकारी नहीं आती है, ये धंधा ही ऐसा है कि पैसा डुबा के जी सीखता है सर इंसान। जी सर जी सर। ठीक है, तो पूरा मत बेचिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई बहुत लोगों के पास माइक है, कोई पूछो यार, वरना फिर 2 घंटे से ऊपर हो गया, मेरे तो गला गला भी दर्द होने लगा। Sir, can I ask कोई one पूछेगा? question? हाँ, इंथुजियास्ट जी Sure. पूछिए। So मेरा problem थोड़ा सा it is slightly opposite to what you guys are speaking. So I recently came back to India after I think like couple of I think 2 years back,
and I was based out of Singapore. So therein I was working with the tech companies, और मैं tech companies को easily understand कर पाता था. So my most of the allocation is in tech companies, especially the US tech companies. And over the last couple of years I've started learning more about the Indian markets. I think like Indian markets में पैसा बनाना थोड़ा मुश्किल है. You need to have that depth, right? Understanding like different sectors, let's say pharma, chemical and all that. So I'm building my capability on that. So I just wanted to ask, like, what is your view on this allocation? So currently, I would say like 10% is allocated in India and 90% is in US. And now I started feeling that I think the returns that I could expect would be much more from India rather than from US. So do you guys have the same viewpoint, and do you suggest me kind of like moving that money back into the Indian markets? And Can I answer? sure, yeah. हाँ रौनक भाई बोलिए. I'm saying अरे आप one thing is you can. yeah, sorry. So I was actually, I think like back in 2007 2008 I started investing in Indian markets, but I think उस time पे थोड़ा सा वो जो crash आया था ना, so after that I think I'm kind of like bit scared with that, the crash, as well as I'm not very, I would say, I think one of the issue that I feel is कि मतलब जो मैं अभी read करता हूँ कि that the books are not very clean of the Indian promoters as well. So I think like these are like couple of issues that I feel. So I just wanted to kind of like get a sense of it, and I do kind of like understand that there are definitely good companies which I feel could be a part of my portfolio. रौनक भाई. Okay, if you want to think and compare about the US investment and Indian investment, right? So actually, I did some research on that, and unfortunately, there are very few economies who are always keep growing, and US is one of them, right? So if you are, you think that if you are in 90% into US and 10% into India, if you want, yeah, you can come to 30%, you can invest 30%, but to me, I think from developing in economy, we will be surely a market leader, and we may do quite well. But if you think about US, I think to me, US might do better than us in upcoming years. That's what I can say, that because there are tremendous growth opportunity will be there, because their federal structure is created in that a way that they are actually promoting the business in an economy in all the way. It's not in all aspects, and the political systems which we are sitting and the US are sitting are quite differently, and they might be, according to me, in a better position than us. So that's what I can say. So yeah, Anand bhai, you can add if you want to add. I have a different take on this. See, enthusiast bhai, you whatever money that you are earning, I suppose you want to spend it in this lifetime. So I have a question for you. You want to spend it in India or in US? So um, honestly, I think like I'm pretty confused, but I do feel that I Okay, think that part after also. 5 or 10 years, Okay, I'll give both the yeah. assumptions. Okay, I'll give both of them. Got it. You all But are I confused. think, See to be what honest, happens. like post retirement, I do feel India to be my home. And then currently I'm in India, but I don't know like if I'll be staying in How India. old are you? So I'm 35. अभी retirement के बाद तो बहुत maybe you'll like an Australian girl and so on and you'll settle No, in I'm Australia. already We don't know, married, right? so So I'll give you all the yeah. okay, okay. Yeah. So I'll give you both the Sure. scenarios. See what happens. Why it is very vital is that US will also grow very fast. India will also grow very fast, and both will have its own challenges. In next 10 years or 20 years, there might be wars also. There might be famines also. There might be so many things. But one thing we are very sure, in 10 years, the currency, the dollar and rupee, that exchange rate will not remain the same. So let's say you invest in US, do the calculation, and you get 25% every year. Okay. And after 15 years, if value of the Indian currency is much more than what it is today, by any chance, you would have, in rupee terms, you will have subpar returns. So after 15 years, if you want to buy a bungalow here, if you want to gift money to your relatives in India,
the value of that money will be far less. So I always advocate, rather than trying to figure out which market will grow fast, you should look at where your interest lies. If you think your majority of your interest is going to lie in India, that becomes your ghar ka khana. Then you invest in India so that you don't have any currency risk. See, currencies are pretty erratic. If you look at Brazilian real, or if you look at Turkish lira, or you look at Russia, all emerging market currencies are very erratic. In 2007 or something, a rupee went to 39. Okay, so I'm telling you, for that sake, for better returns, don't chase other borders. You can always diversify up to 30%, 35%. You can keep in US, but 60 to 65% of the money you keep it in India if your interest lies in India, long-term interest lies in India. We're talking long-term here, and so that you will be able to avoid currency risk completely, which cannot be hedged by a retail guy. Okay, Yeah. and India is going to grow very fast. I'm telling you. Hello. Yeah, I think that's a Hello. very well call out. In fact, the reason I asked this question is because I saw that the Morgan Stanley report, wherein it was saying that probably the Indian bonds will start getting listed. So that's where I think it kind of like struck me that there is definitely a currency risk, and probably if the rupee starts getting stronger, then my returns, the overall returns would kind of like will start coming Exactly. down. You got the Yeah, point, right? Yeah. got it. Okay. Next Thanks. question. Hi. Hi. Hello. Can I speak? Yeah, Anand. बोलिए ना, बोल तो दिया ही आपने. Anand. रोनक सर, हमने ऐसा पढ़ा कि आपने बहुत ही कम कैपिटल से शुरुआत की थी और अब आप अभी यहाँ पर आए हो. सो योर इंस्पिरेशन फॉर लाइक मी सर. सर मैं पूछना चाहता हूँ, सर मैं निफ्टी इंडेक्स में सेलिंग इंडेक्स सेल करता हूँ सर. ऑप्शन सेल करता राइट करता हूँ. मेरा अरे भाई, मैं क्या इंस्पायरेशन, आनंद भाई भी इंस्पायरेशन है यार. हमारी बात कर. अरे सुनो रोहित, आज बहुत रात हो गई है. रौनक भाई के साथ एक स्पेशल एपिसोड करेंगे, पक्का, प्रॉमिस. ओके, फॉलो करते रहना उनको. विल डू इट. ओके. और सेकंड क्वेश्चन है सर मेरा. सर हम ऐसा मेथोडोलॉजी रहती है कि 40 पी के ऊपर स्टॉक नहीं लेना, 50 पी के ऊपर स्टॉक नहीं लेना. सर अब स्टॉक लाइक डीमार्ट सर ऊपर ही जा रहा है, तो हम उसे क्या मैं तो मोमेंटम को चेज करता हूँ. जिसका 40 पी है, 50 होने दो, 60 होने दो, 80 होने दो, कहाँ तक जाएगा हमको नहीं पता है. अरे वैल्यू स्टॉक को मैं चेज नहीं करता. यस आज से 10 साल पहले 15 पी भी महंगा लग रहा था. अभी 40 पी लोगों को सस्ता रहे. डोंट थिंक इनटू दैट एंड पुट इनटू दैट वन. या वो आनंद भाई सही बोल रहे हैं. जस्ट गो विद द मोमेंटम. यप. Hi. नेक्स्ट क्वेश्चन. Anand, can I also join? आप ज्वाइन तो कर ही लिए, बोलिए ना. Okay, so a big guy to Ronak sir, and I am a big fan of you. Like the previous speaker said, I have been following you for the last नहीं कहा, नहीं रुक जाओ. कहा तो मेरा कोई कमेंट, तो मैं तो फूल वाला कमेंट तो एक भी देखा नहीं हो. ये झूठ मत बोला करो ना. यू डोंट फॉलो मी. मन से नहीं फॉलो करते हो. करता हूं मैं. सीरियसली मैं आपको मैं सारे लोगों को मैं फॉलो करता हूं. अभी से मैं डेफिनेटली मैं आपको मैं आपका पोस्ट में लाइक करूंगा. मैं अभी ऐसे ही अचानक मैं देखा था, मैं ज्वाइन कर लिया. तो मुझे बताओ, आज बता ही दो कि क्या शर्म आती है. मैं क्या मतलब कॉमेडियन लगता हूँ? क्यों नहीं करते? आप तो बहुत you're doing a very useful work for a lot of audience. That has to get reflected in the likes. So thanks for that, and I'm very excited. देखो आने वाला जो जमाना है ना. अच्छा बोलिए. So I'm excited to get in touch with Ronak sir. And sometime back I saw Ashish Gupta sir also. भाई पहले तो इतना सर बंद कर दो. रौनक ही बोलो. That's okay. मैं अभी आनंद साहब से छोटा हूँ यार. रौनक सर आप मैं जी बोलूंगा आपका मैं. तो आपको पता नहीं कि आप जो एस्पिरेंट ट्रेडर्स है उनके बीच आपका कितना इमेज है और कितना बहुत जबरदस्त फॉलोइंग है, जिनके जो भी अच्छा सुनो ना, पीक भैया, बहुत लोग वेट कर रहे थे. 30 से ज्यादा मेरे पास रिक्वेस्ट है, थोड़ा जल्दी से पूछो ना प्लीज. रौनक भाई रोज नहीं मिलते हैं, उनसे पूछ लो क्या पूछना है. हेलो. हाँ पूछिए ना सवाल. सर हेलो.
बोलो Yeah. I can So hear. my view, my question is to Ronak ji, that sir, can somebody make keep doing option buying as well as option selling? If somebody is primarily an option seller, 90% of the time, can he allocate a 10% of his energy and capital towards option buying also at the same time, जो simultaneously? ऐसा होता है, ऐसा कुछ सक्सेस आपने आपको कभी अचीव अरे हुआ? समझ गए एक I got your सेकंड question. I got your question. So, see, let me tell you. First thing is there are almost 450 plus people here. There will be no such kind of trading like option selling or option buying, right? First thing, remove that thing in your mind that it's a option selling or it's a mix of trading, right? We are not here to sell the options or we are not here to buy the options. We are here to make money. So first thing, something which is in your mind, it should be we want to make money. Now it comes to the market, that what market says, right? Yeah, of course, we are not coming here to take any gambling type of decision. People are saying that buying options will not work or selling options will take a huge risk. See, you can trade psychologically, I don't buy naked option. In my life, I never buy. But that doesn't mean I'm not buying options. I do buying option. I do debit spread lot of times. I do the ratio spread on the debit side lot of times. Even today, I am holding some debit spread on the call side. See, that doesn't mean that option buying is a bad thing. See, but if you wanted to make money only through option buying, or if you wanted to make money only through option selling, that's a big problem, right? That's a big problem. Big problem. It's not like that I want to make money from only option buying or selling. It's a mix of both, right? You can make money from buying as well, and you can make money from selling as well. Now you have to decide. If you are buying every day, you will lose. But at the same time, with selling, at least you can do some adjustment and you can minimize your loss. Yeah, loss will be there in selling. But in buying, once loss will start, if you psychologically not strong enough to cut your loss positions, you might be end up with the 0.05 like that. So that's the reason, things is like that. In option selling, some adjustment can be done. In option buying, that is not possible. If you wanted to bifurcate my income, 70 to 75% comes from the selling, but there are 25 to 30% my income also comes from the option buying. That not pure option buying by doing debit spread or residual. So it's not like that selling or buying will only kind of bifurcation. It's, you can think about, I'm trading option. It's option trading, which is the right word. Got it? Acha, guys, I promise we'll do a session with Ronak Bhai definitely, and he will answer all the questions. Today we will stick it to long-term view on Nifty and our economy and stocks. So next question, very, very briefly. I have 45 requests now. I'm not able to take all the requests, and I'm not like that. So please, next question. Jaldi se. Hello. Lot of people took mic from me. Yes, Yeah, ma'am. hi, I'm Boliye. Dr. Mamta Jainavia, and thanks for this session. I'm quite enjoying the session. I just wanted to ask it across, people like us who do not have too much of time nor do understand the nitty-gritties of the market, but we have been investing. I have been personally investing it from last 25, 30 years, constantly on and off. In today's scenario where everything has gone much more higher, and if we are sitting on cash, what is your advice to people like us who cannot follow it on a daily basis, would like to be safe? How do you want us to go about it? Okay, ma'am. I think you did not join in the very No. beginning, so I'll Yeah. brief it for you. Yeah. So everybody has a view, and a lot of people don't give their view straight and simple. But I believe in giving it straight and simple, and I have the right to be wrong. I'm very bullish on Indian economy, and I'm very bullish on where the Nifty will be. I have given a target of in 2 to 3 years that it will be 3 times from here. So we are talking about 50,000 on Nifty. That is my personal view, and it will be led by financials and banks, commodity stocks. In fact, I was doing an analysis today, and I'm not able to think of any other sector apart from hospitality, aviation, and entertainment that sector will not do well. Some sectors might surprise us, and we have seen a bull run in commodities already. My thesis is based on the fact that we will see inflation, we will see a lot of exports because of the things which are happening in China. We will see a lot of government spending, which government has already committed in last budget and economic survey, like humongous kind of spending that we are talking about. All the PSU banks have already cleaned the balance sheet.
the merger which was pending for a long time, it has come down from I think 27 to 12, and now the government is saying it will go to 8. And only missing part of the puzzle is rural economy, which is still to take an uptick. But leaders in the game like HDFC Bank, they have in the con call they have said that they are going to increase their rural presence to double. I mean, reaching up to 1 lakh villages, they took around 10 years, and they are going to double it within a year. That kind of hurry they're showing. So I believe the rural play is also going to pick up like anything. All the variables, according to me, are pointing to double digit growth in our economy with high inflation. So obviously it will create a lot of gaps in the haves and have nots, but we are here talking about only stock market. So if you ask me, economy is going to do pretty well. Index is going to be like crazy well. That we are seeing the unbelievable run which has just started. People are in denial. I think at 18,000 everybody is going to join. At 19,000 people are going to enjoy, and so on. The bull market runs like that so only. much. And if you don't have time to invest on a daily basis, I strongly recommend that you go with the index fund. You can buy any reputed banks, bank, not bank, I mean AMCs like HDFC AMC or ICICI AMC or even Mirai AMC. You can asset management company. You I can have been doing that, buy index fund. Anand. That is what I have been doing. That my only concern But you are was withdrawing money at crucial no, times. I'm not You are withdrawn. I withdrawing have money. not withdrawn. I have not reinvested in last 1 year. Frankly speaking, I've not withdrawn any money at all. In fact, I was thinking if my money is really reached its potential or the market returns I've got is very good, should I withdraw it? I've not withdrawn any money. Yeah, that Unless you need it. I mean, I don't this need it. don't. No, I don't need it. And all my returns over a period of years have grown quite handsomely. I have no complaints about it. Like I was thinking whether it's really get matured enough and should I start withdrawing or No. You'll remember my words 3 years down the line. Don't withdraw. thank you. That's what I'm saying. Thank you so much. That's I'm what I telling you with all the conviction that I have, and I have the right to be wrong. So I am not a financial advisor, everyone but has a I right to don't. be wrong. So don't worry on Uh, that. but I am very boldly giving you my view. And I am These doing prices the we are way not you going to said, see. I was doing only the index Yes, funds, only the ones which were yes. there. Yes. That is what I have been doing because It's I don't cheapest. understand that Yeah. way. The other things I don't understand. So I don't want to get into And confusion. don't go too heavy on the debt funds also, because we will see interest rate cycle reversing. The rates have bottomed out like crazy in India. I saw your Companies like comment HDFC. 6 months back. I came out Okay. from my debt fund without even having any knowledge. So, I mean, I made good I comment. hope you don't regret and you have invested in equity, because 6 months back Yes, I was saying invest in equity. I was not following this 6 months back, but 6 months back I started investing very heavily again into I equity. hope from today you'll start following me in I real know. sense. I've already done that. Okay. Thank you so much. So, oh yeah, that is my view. Dhanyawads. Thanks. Yeah, Thanks a that is lot. my view. Yeah. Thank you so much. Next question. Hello, sir. Yeah. Sir, just like I have a question, just like Madam who last spoke, she has this thing in mind that she's in good profits, and also the markets are almost double, or maybe even more than that. Mostly stocks are about 4 times now since last 1 year. So those who want to remain invested, as you are saying that you बोलिए बोलिए हाँ बोलिए कि हिंदी आज में बोल दीजिए हाँ ना, जी हाँ जल्दी जी कि जल्दी हिंदी जैसे मेरी भाषा में अच्छा इन्वेस्टेड है. रहना चाहिए. So is there some way that a retail investor having a portfolio about 10 lakh 15 lakh, is there a way that he can hedge his portfolio? ना हेजिंग. अरे सर, वॉरेन बफे हेज नहीं कर पाता है, बड़े बड़े बैंक्स हेज नहीं कर पाते हैं. हेजिंग इज अ मिथ. हर साल आप जितना गवाओगे, हर क्वार्टर में जितना गवाओगे, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो हेज करने में आपको उतना वो बचाएगा नहीं. तो हेजिंग मैं तो नहीं करता हूँ. मेरे को बस ये है कि कन्विक्शन वाले स्टॉक्स में रखिएगा, और जब करेक्शन आएगा, देखिए 2005 से 2008 में भी 4 बार करेक्शन आया था, बड़े बड़े करेक्शन आया था. चार्ट में जाके देख लीजिएगा, मंथली हाँ चार्ट में. जी जब करेक्शन आएगा तो डर मत जाइएगा. हाँ जी हाँ जी हाँ जी. चलो, ठीक है. थैंक यू सर. वो जब हाँ ठीक. Next question. I'm really Hey, amazed. hi. So many people are saying that it's going to be a Yeah, hi. problem. हाँ, Quick बोलिए. question on the IT sector. I've got actually two questions. One is on the IT sector. The other one is on the gas business. So, IT, as we all know, has been doing really well for the last 2-3 months. It's on an all-time high, and I somehow missed the rally. I could not invest much in IT stocks. I have a very small investment in Infosys and HCL and Nazara Tech. So, what is your view on the IT sector? Do you think it's the right time to put money? And I'm a long-time investor, Yes. say 5 to 10 years.
say if I have to pick up an HCL or a TCS or a LTI, right? Do you think? See, I will not comment on HCL, but LTI, TCS, Infosys, pretty good stocks, and going to do pretty well. But is it the right time So to that's invest it. now, or should I wait for corrections? If you have never invested, if you're new to the market, then divide it into 5 parts and invest slowly. Don't go all in at once on one single date. Probably divide 45 days apart and things like that. But why only IT? There are so many other things which are running now. No, Banks will I'm well run, invested in other commodities will sectors. run. I'm well invested in the rest. So IT will IT is also the go only up, and sector it's I very missed difficult. the rally. I could not invest much. It's very difficult to say which sector will be the number one, and let's not waste time in predicting that. But all sectors, barring only couple of, as I said, in my humble opinion, are going to do pretty well. So if you want to allocate to IT, and if you are already invested in other sectors, do. I mean, and I don't have a view on Nazara or HCL, but all the other companies that you mentioned are pretty good, and you can go equal. Diversification is the key. Don't go very heavy in one Oh stock. yes, That is the absolutely. key. The idea is to invest pretty much equivalent amounts in all of these stocks. I wanted to pick up about 5. And minimum 20 to 25 stocks. So my portfolio consists of about 45, 46 stocks. Too much. Yeah. 25 से ज्यादा भी बहुत ज्यादा है, और 20 से कम है तो भी कम है. या मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी बता रहा हूँ आपको. Okay. तो 45 करने से अच्छा है तो इंडेक्स फंड ही कर लीजिए आप. वो कर रखा है, वो अलग है. Mutual funds are वो separate. अलग है. ठीक है. ठीक है. एक next last question is on the piped business. जैसे अपना IGL हो गया या अदानी गैस हो गया. नो आइडिया. I mean, ये इतना रिमोट जाना है क्यों सर? आपको रिलायंस ऐसा भाव दिखाएगा ना साल 1.5 साल के बाद, HDFC ऐसा भाव दिखाएगा. HDFC देखो ना 3 साल पहले कहाँ था. राइट, कहीं नहीं था. राइट. हाँ, एग्जैक्टली. कोटक कहाँ था? बहुत कम था हाँ, तो कुछ साल पहले. अंधेरे में जाके सुई क्यों ढूंढना जब आपको पास सोने की चाबी डेस्क पे रखी है. Don't go for cute things. Don't go for sexy things. I'm telling you. Okay. Make it boring. Stocks which do not move much in a day, right? अरे बैंक बीसी बाय कर लो यार, बहुत हो गया. हाँ, बैंक बीस. सर बैंक बीसी बाय कर लो. हाँ, exactly. I am buying 10,000 each every now and then. बैंक बीस में भी 10,000 करके थोड़ा डालता रहता हूँ मैं. I keep buying बैंक बीस बाय कर लो. मेरा अभी मैंने 20-30% इन्वेस्टमेंट बैंक बीस में ही डाला है. तो ठीक है, उसको कोलेटरल करके ट्रेड कर लो, खत्म बात. Okay, we'll wind up in another 10-15 minutes. So if you have any questions. Hello, this is Manish. जैसे जैसे आपने अभी कहा कि डाइवर्सिफिकेशन इज द की एंड वी आर बुलिश ऑन इंडियन इकोनॉमी, राइट? एंड आई एम आल्सो अ बिग फैन ऑफ इक्विटी. तो मेरा मेजर जो एलोकेशन है वो इक्विटी में, स्टॉक्स में और म्यूचुअल फंड्स में है. तो आई वांट टू नो कि जैसे अभी गोल्ड के प्राइजेस गिरे हैं विद रिस्पेक्ट टू एंड अभी जब ये बता रहे थे कि हाई कन्विक्शन ऑन निफ्टी की वो 50,000 तक जा सकता है. तो व्हाट यू प्रपोज कि गोल्ड में अभी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई करनी चाहिए, एंड इफ यस तो क्या जो हमारा ये गोल्ड बीस है उसमें जाना चाहिए या फिजिकल गोल्ड में वी नीड टू हैव द डाइवर्सिफिकेशन? देखिए, गोल्ड का बड़ा अच्छा आपने पूछा. मैं पहले तो अपना पर्सनल आपको बता देता हूँ, ठीक है? तो वो बताना आसान है. मैंने गोल्ड में कभी इन्वेस्ट नहीं किया, ठीक है, आज तक नहीं. ठीक है. लेकिन अगर करना चाहते हैं आप तो 15 से 20% स्टेक आप गोल्ड में कर सकते हैं. डिजिटल गोल्ड में करना है तो गोल्ड के ऊपर तो एक अलग ही करना पड़ेगा अपने को वार्तालाप. लेकिन अगर डिजिटल गोल्ड में करना है तो SGB ही एक तरीका है, बाकी सारा स्कैम है. ठीक है. SGB और ये मैं काफी स्टडी कर, वही जो आप जो 7 साल का गूगल कर लीजिएगा. उसी की बात कर गूगल रहे कर हैं. लीजिएगा SGB. हाँ, ठीक है. और फिजिकल गोल्ड में क्या होता है कि आपको जो मेकिंग चार्जेस, जब जैसे गोल्ड का कैसा होता है, अगर इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, वाइफ की गहनों की बात नहीं हो रही है, जी. तो जब आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बैंक भी आपको गोल्ड बेचते हैं, गोल्ड का सिक्का बेचते हैं, गोल्ड के बार बेचते हैं, बैंक भी बेचते हैं. उसका रेट भी पब्लिश होता है. और आप तनिष्क में जाइए या अपने कोई ज्वेलर्स के पास जाइए और वहां से देखिए कि गोल्ड का क्या भाव पड़ रहा है. आपको सीधे 15 से 20% की मार आपको खरीदते टाइम ही पड़ जाती है. ठीक है. जी. तो म्यूट कर लीजिए, इको करता है. तो खरीदते टाइम, और जब बेचने जाएंगे, मैं आपको अपने एक फ्रेंड के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब आप गोल्ड का ज्वेलरी वगैरह कुछ बेचने जाएंगे तो इट्स नॉट सो इजी टू सेल इन इंडिया. और आने वाले टाइम में जो मोदी जी की कृपा है उस पर इतने डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, इतनी रसीदें चाहिए होंगी, पुराना गोल्ड आप बेचने जाएंगे तो इट विल बी लॉट ऑफ हेडेक. तो इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड अगर आप खरीदना चाहते हैं, गोल्ड का बार, गोल्ड का बिस्किट, तो खरीदते टाइम ही आपको काफी उसमें कट लेना पड़ेगा, जिसको आप बोलते हो बिड ऑफर स्प्रेड. बैंक आपका गोल्ड वापस खरीदता नहीं, RBI ने वो राइट नहीं दिया है.
तो आपने अगर आज बिस्किट खरीदा बैंक से, तो आप एसबीआई को वापस वो बिस्किट नहीं बेच सकते हो, एसबीआई नहीं बाई करेगा। ओके, फिर आपको वो किसी ज्वेलर को बेचना पड़ेगा, कभी तो बेचोगे ना, खाने वाले बिस्किट तो होते नहीं है। तो उसको जब आप किसी ज्वेलर को बेचने जाओगे तो वो अपने टर्म्स पे अपना रेट लगाएगा, एक बार वो करके देख लीजिए आप, तो आपको समझ में आ जाएगा इस पूरे प्रोसेस पे 20 से 25% आपका लॉस हो जाता है। इसको ट्रांजेक्शन लॉस बोलते हैं, ठीक है। तो मैं तो नहीं रिकमेंड करता हूँ, और अगर आपको डिजिटल गोल्ड करना है तो गूगल कर लीजिएगा, एसजीबी बोलते हैं, वही एक सेफ प्रोडक्ट है जो रेगुलेटेड है, बाकी अनरेगुलेटेड स्कैम है। ओके, ठीक ओके, है, थैंक यू। अभी ये सारा मेरा ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मैं तो अपना ही ओपिनियन बताऊंगा, राइट। ओके ओके, ग्रेट, थैंक यू। और 15 से 20% से ज्यादा मत जाइएगा, गोल्ड पे बहुत बुलिश होने की जरूरत नहीं है, इक्विटी जनरली आउट परफॉर्म नहीं करेगी। नहीं सर, गोल्ड अगर जितना घर में यूज है ना पहनने के लिए वही यूज करो, भाई मत करो अरे इन्वेस्टमेंट। सर, पहनने वाले का तो एंड ही नहीं है। वो भी सही बात। Hello. Hi, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। Anand ji and Ronak ji. A big hello from me, Preeti here. So, my question is basically, as you said that you are looking forward for a huge jump in Nifty, maybe as per your studies and your conviction. So, I would like to understand which are those stocks which you think can do a massive and a very colossal job in next 5 years of time or next 6 year times, which are underrated at the moment. So there are many stocks which I believe have been doing very well and people know it and it's already on the table to people. So are there any stocks which you think that is unknown to people and which can fetch extremely marvelous result maybe in next 5 years or maybe in next 7 years of time, which people as of now don't know, maybe or any sector? Yeah, actually, this is a very good question. And see, whatever we see, everybody else sees. Okay, they have the Bloomberg terminal, they have all the data. So it's very difficult to find out something which others have not already discovered. Okay, so whatever is running up, for example, recently I think Tata Steel or SAIL issued the list of investors, and all the Junjunwalas, all the Damanis, and all the this Basant Maheshwari and all the even Zerodha, everybody had invested in steel 6 months back, and they had the crores of. So everybody goes with the trend. I mean, they come on TV and say cute things that I'm a value investor, but they will come and buy steel if it is going up. Having said that, if you want to look at something which has not gone up, I will tell you one sector which is like in PSU banks, smaller PSU banks are going to do much better because they have done a lot of cleanup. After the merger, things are pretty good, and government borrowing, they are going to take a huge burden of the government borrowing, which I have already discussed. So if you have not seen run up in any of the PSU banks, you can look at it. As I said, you have to do the diversification. It shouldn't be more than 2-3% of your portfolio. That is one. In other stocks, I think telecom has not seen the light of the day for long. Bharti Airtel, I'm very bullish. It has just started going up. So Bharti Airtel has a lot of catch up to do, and it's part of the index also, and so on. So Bharti Airtel is one, and commodity. So in commodity, I mean, the bull run has just started. It will last for 5-7 years. The commodity bull run, But and then, especially. don't you think so that the PSUs may surely run? But then again, the problem is the kind of merger happening every now and then, the circulars are being spread. Because I had been a So banker, that so I know that what impacts, a bank mostly in terms of their entire per capita income or their entire, body after a merger. So probably, these kind of mergers, which is happening very now and then, so it can hit a PSU bank, and mostly the mergers are being done in the PSUs itself. So what's your take on that? See, that is why probably people have not touched it so much, because that there always has to be some risk why people are not taking it. But if you want to go for stories which are still not discovered, there will be some risk into it. I believe PSU banks are going to go much higher from here, including SBI. I have SBI, but you have asked about stories, which are like a little unheard of. So PSU banks in general, you can look at. Even other PSUs, government slowly government is. I think the selling plan of 5 lakh crore or something, if I'm not wrong, or 8 lakh crore, that they have. They're going to sell everything eventually. So if for example BPCL or even ONGC and all, there will be stake sale and so on. So these are the two things which people are generally apprehensive till it is too late. So you can look at it, and in other is Bharti Airtel. Surely not Idea Vodafone, because they have some other issues. So And even Reliance has a lot of scope to go up. And if you are, I think Preeti, you are a trader as well. yeah.
if you can take some risk, you can take a leverage bet in Reliance. Reliance has a lot of catch up to do. Mm-hmm. So see, as you said that most of them are getting sold, and things will work like that in future as well. So do you think so that after getting sold, the kind of valuation these organizations or these entities will have the same way that it is now at the moment? Because if I say after selling of these entities, don't you think so that we may have some kind of demonetization or any kind of depreciation in the valuations of those particular industries or those particular entities? See, See, government, whenever it takes focus on something, on any company, I mean, before the merger, a lot of due diligence will happen, a lot of, higher level official reshuffle, and a lot of things will happen. If government simply just starts staring at a company, the profitability of the company will go up and inefficiencies will go down. It has happened with banks as well. So, if it just comes on the card itself, you will see a lot of run up. So, yeah. So, but you're right. I mean, who knows in future what will happen? But if I can give you example from the past, for example, which was the company in Rajasthan which government sold to Sterlite? Uh, the Jing company, Hindustan Zinc. Yeah, Yeah. yeah. So see, it became 10 times, 20 times, right? Just after, and government still holds 26% of the share So and so on. now, So after value, so now, as if we've got a notification that Hindustan Copper is also getting, they are probably trying to yes, sell it. yes, So, that's what I'm saying. Buy Hindustan Copper. Yeah. yeah. So OFSS is on a discounted price. So that's how it goes. I mean, I have not looked at personally, but I'm just giving you a theme to, further probe on, and then we can discuss offline these individual names. Sure, sure. No, I just asked because normally now what we are not no, people are looking at the moment is probably EV is a theme that they're looking forward to, or maybe chemical bubble is there, so people are very blindly following chemical thing, and they are investing hard on that. Then again, the digital is there, IT is there. So apart from that, I personally believe that there are many things which are there on table and which everyone is picking up. But then we have to find out something which is behind the table or beside the table and then pick it up, then probably we can earn Actually, good. actually, Preeti, if you look at my portfolio, which I have shared with today's, message Mm-hmm. of this podcast, I have all the sector leaders and I have very well-known companies, and I don't expect too much of return, and I don't expect too much of volatility in my portfolio. So I go like that. I don't go for hidden gems. Uh-huh. So yeah. All right. No, that's for the question. Thank you, Anandji. Hello. Hi. Hello. Yeah. Yeah. Hello. Yeah, Kapil, go बोलिए ahead. Yes सर. Yes सर. सर एक्चुअली मेरा एक डाउट था, जैसे कि मैं इन्वेस्ट करता हूँ किसी शेयर में, अगर वो मेरे को 20 to 25% रिटर्न दे रहा है, मतलब जैसे 6 months या 7 months के अराउंड, तो मैं उसको विड्रॉल करके ऐसे अपने कंटिन्यू करता रहूँ ईयर्स, या फिर मैं SIP के थ्रू ही इन्वेस्ट करता चलूँ, चाहे वो नीचे आए या फिर जो भी करे, मतलब ऊपर? हाँ, SIP चालू रखिए। SIP रिटर्न से क्या मतलब है? अभी 25 दिया, कल 15 देगा, कल 35 देगा। रिटर्न से मत देखिए। SIP करा है तो चालू रखिए उसको, डिसिप्लिन की बात है। मतलब मेरा थोड़ा ऐसा व्यू था कि सर जैसे क्या कहते हैं, अगर मेरे को जैसे 25% रिटर्न दे रहा है, फिर एक टाइम के बाद वो क्या कहते हैं नीचे तो आता ही है, वो 10% पे आ जाएगा दोबारा मेरा रिटर्न, तो मेरा जो 15% का एडवांटेज है वो मेरा मतलब ड्रॉ डाउन हो जाता है। तो मैं इसके रिलेटेड थोड़ा कंफ्यूज था कि मतलब मैं SIP को चाहे वो कितना भी गिरे, कितना भी जाए। वही सर, वही आपको बता दिया सर। ओके ओके SIP को कंटिन्यू रखिए। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ डिसिप्लिन। ओके सर, ओके, ओके, थैंक यू। हाय आनंद भाई, एक और क्विक नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन। हाँ, अभी किसी ने MSCI की और डीमार्ट की बात की थी, तो उस पे क्वेश्चन है। अराउंड 2 months पहले मैंने ET में शायद पढ़ा था कि डीमार्ट और इन्फोएज ये निफ्टी 50 स्टॉक्स बनने वाले हैं 49th और 50th नंबर पे, 1.5% और आधा परसेंट वेटेज के साथ। तब मैंने लिया था, और उसके बाद एक 20% बढ़ा, एक 25% बढ़ा है 2 महीने में। बट उसके बाद मैं रिसेंटली ट्रैक कर रहा था तो मुझे मिल नहीं रहा, और उन्होंने कहा था कि अराउंड सितंबर अक्टूबर की रीबैलेंसिंग में होगा ये। तो आपके रिसर्च के हिसाब से कुछ आइडियाज के बारे में? नहीं, ये तो आपको गूगल ही करना पड़ेगा, इसका आंसर नहीं मेरे पास। ओके ओके, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। ओके, जो जल्दी पूछ ले। Time. I have just मेरे पास दो quick questions, sir. I want to know what could be the impact of UP elections
on stock market? I know we cannot predict corrections, but do you think yeah RSI जो 88 तक I mean Nifty will get overvalued and UP elections एक बहाना हो जाएगा corrections के लिए, so can we have some cash ready? आपको क्या आप यूपी के हैं नहीं क्या? नहीं आप टाइटन भाई है नहीं नहीं सर, यूपी का नहीं, बस मेरे को बस एक जस्ट वांट न्यू व्यू सर, यूपी इलेक्शन से कुछ हो सकता है शायद, वी कैन गेट करेक्शन जैन टू फेब समथिंग लाइक। सर आप कहाँ से? आपको लग रहा है यूपी में बीजेपी लॉस करेगी? अरे वो टाइटन भाई नहीं मैं रौनक भाई भी बता रहे हैदराबाद थे। का हूँ सर, मैं हैदराबाद का हूँ। और मैं एक और एक क्वेश्चन है हैदराबाद में कहाँ रहते हैं? सर, ये गरीब सी एक डिस्ट्रिक्ट है करीमनगर, वहाँ रहता हूँ सर। जी करीमनगर जी के हैं, जी। अच्छा ठीक है। एक ये म्यूट कर लीजिए एक दूसरे को। ये क्वेश्चन है और एक छोटा सवाल है। सो स्मॉल कैप्स में डू यू व्हाट इज द व्यू ऑन केमिकल सेक्टर? बस यही, थैंक यू। देखिए आपका पहले यूपी का बता देते हैं। योगी जी भारी बहुमत से जीत रहे हैं और मैं बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूँ, ठीक है ना। लेकिन ग्राउंड में क्या हो रहा है वो पता करके रखना पड़ता है। अगर तो सवाल ही नहीं है कि वो हार जाएं, ठीक है। हाँ तो वो तो मोदी सही जी है, से भी ज्यादा यूपी में भी पॉपुलैरिटी है। बीजेपी नहीं लूज करेगी, वो कंफर्म है ऐसा। और वो आई थिंक मार्केट करेक्शन करेगा नहीं, वो एप्रिसिएशन का बहाना बन सकता है। करेक्शन का तो पता नहीं, मतलब मार्केट मैं को अभी अभी थोड़ा मैं अप लखनऊ में अब अभी गया था, पूरा मतलब एवरीबडी इज लाइक योगी 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 योगी, मेरा तो सर पक गया। तो योगी जी नहीं हार रहे हैं। ओके, दैट इज वन। केमिकल का जो आपने पूछा, अच्छा सॉरी रौनक भाई आप कुछ बोल रहे थे, मैंने डिस्टर्ब कर दिया, बोलिए ना। अरे मैंने वो बोला कि वो डेप्रिसिएशन मीन्स गिरने का कारण बने या ना बने, लेकिन बढ़ने का बन सकता है। तो वो है कि अगर जिस दिन यूपी का रिजल्ट आएगा मार्केट 2-4% बढ़ गया, फिर वहां पे ही बॉटम आउट हो गया, बन सकता है पॉसिबिलिटी। और मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ भैया, मैं बीजेपी सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन ग्राउंड पे क्या हो रहा है वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा ये कि केमिकल सेक्टर आपने पूछा, जब 2000 पिछला इन्फ्लेशन आया था 2008 से 2012, तो केमिकल्स लाइक सल्फर एंड ऑल इट वेंट 12 टाइम्स 13 टाइम्स। ओके, सो केमिकल सेक्टर पे बहुत बुलिश रहने की जरूरत है, लेकिन डाइवर्सिफाई करके रखिए। और अगर कंपनी में वहाँ थोड़ा घोटाला भी होता है, मैं तो डायरेक्ट कमोडिटी की बात बता रहा हूँ आपको, लेकिन केमिकल सेक्टर में छोटी कंपनी में डाल रहे हैं तो घोटाला होने का चांस रहेगा, तो 2-3% से ज्यादा मत डालिएगा। रोनक भाई, यू वांट टू ऐड समथिंग? आई एम गुड। बोलिए, Okay, नेक्स्ट yeah. क्वेश्चन। Hello, Anand sir. Hello, Ronak sir. I understand that you guys are very bullish on Nifty and overall the market, equity markets, and also on the real estate market also. My question is related to REITs. Currently, we have three REITs in the market. We have Embassy, we have Brits, and we have Mindspace. So, like, how do you see the future? Because what I believe that from 2022, all the offices will be open, and this REITs will do really good, and the yield which they provide is almost around 5 to 6%, which is greater than an FD return, and so like and I've very good समझ investment गए, समझ गए, investment. Yeah. So, what would be your view on the same? समझ गए। देखिए भैया, अगर मैं आपको अभी बताने लगूँ ना कि कितने बिल्डर्स चोर हैं, तो पूरी रात खत्म हो जाएगी। यूनिटेक, सुपरटेक, जेपी, आम्रपाली, Correct. अरे ये तो सिर्फ दिल्ली के बताया आपको। और ये नागार्जुना भी फंसा था। ये जो बिल्डिंग का काम ही ऐसा है ना कि बहुत चोरी का काम होता है, Correct. ठीक है। True. तो Very true. इसमें आप मत पड़िए, अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो। No, आप no. इंफोसिस में लगाइए, आप टीसीएस में लगाइए, और आप एचडीएफसी बैंक में लगाइए। आपको अगर और नीचे जाना है तो मिड कैप में लगाइए, नहीं, मिड कैप का। लेकिन सर, हाँ I would सुनिए, let और अगर आप have a pause. बोलिए मैं बोलिए। नया इन्वेस्टर नहीं हूँ. I'm there in the market from 10 to 11 years. बट ये जो कंपनीज मैंने आपको बताई उसमें ये सारी चोर कंपनियां नहीं है, इसमें ब्लैकस्टोन है, और ब्लैकस्टोन जिसमें अरे बाबा, हाँ जो आगे चोर होगा उसके बारे में अभी कहाँ पता है, ये तो पुराने चोर हैं। जो पकड़े नहीं गए उनका क्या पता, समझ रहे हाँ हो। हाँ अब आगे बोलने दो। ओके अगर आपका इंटरेस्ट है, और मैं मानता हूं कि कमोडिटी ऊपर जाएगा, कमोडिटी स्टॉक्स भी ऊपर जाएंगे, और मुझे रियल एस्टेट भी ऊपर जाएगा, ओके और ऑफिस स्पेस भी ऊपर जाएगा। ओके अगर आपके पास पैसे हैं तो आप कमर्शियल स्पेस खरीद लो, छोटा सा किसी ऑफिस में, बहुत महंगा नहीं मिलता है। आप एक घर खरीद लो, ओके आप लैंड खरीद लो। लेकिन इनके भरोसे रहोगे तो अब अगला चोर कौन बनेगा वो तो न्यूज़पेपर में ही पता चलेगा। आम्रपाली में जिन्होंने लगाया था पैसा, ओके उनको थोड़ी ना पता था कि 15 साल तक पोजीशन नहीं मिलेगा। आम्रपाली के तो धोनी जी ब्रांड एम्बेसडर थे। ओके
टाइम्स ऑफ इंडिया में बड़ा बड़ा 2 बार धोनी बन के आते थे, एक फ्रंट पेज पे, एक लास्ट पेज पे। ओके ठीक है, तो इसलिए आप उससे दूर रहिए। मेरी राय है, मतलब मेरी बात राय नहीं मानेंगे तो मैं बुरा नहीं 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 मानूंगा, तो ये मेरी राय है। एक और हाँ, पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा कि 30 सितंबर से वो निफ्टी में का भी पार्ट होने वाले हैं रेट्स, ऐसे बात चल रही है। वो जाने दीजिए ना। एक टाइम पे तो एडीएजी, अनिल अंबानी की सारी कंपनियां भी निफ्टी की पार्ट ओके थी, यस बैंक भी निफ्टी का पार्ट हाँ था, ट्रू जी टेलीफिल्म्स भी निफ्टी का पार्ट ट्रू था। तो निफ्टी का पार्ट होने से सुखाव के पर नहीं लगे आने वाले हैं। मेरी राय नहीं, यही है कि आप इससे दूर रहिए, और भी दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसपे आप पैसा कमा सकते हैं और वो ज्यादा इजी है ट्रैक करना। ओके यस बैंक का विक्टिम मैं भी हूँ आनंद भाई। हाँ हम हाँ हाँ, क्या सभी बोल है। रहे हैं? मैं भी यस बैंक का विक्टिम हूँ। ओके थैंक यू थैंक्स अ लॉट।